5G का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया। ये भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूँ। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। कुछ लोगों को मोदी से इतनी परेशानी क्यों है, और आज इसकी वजह मैं भी रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये जो नाराजगी दिख रही है ना, ये जो बवाल हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की काली कमाई के रास्ते मोदी ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। 2016 में जब मैं देशवासियों कहता था आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? आपने कुछ समय पहले IMF का एक रिपोर्ट आया जो है, एक वर्किंग पेपर, शायद आपने जरूर देखा। ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसी योजनाओं के कारण महामारी के बावजूद भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म होने की कगार पर है, और यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, तो विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं। भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है। इतना बड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों। इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं, और डीबीटी का सीधा The BJP has called for a 12-hour bandh in North Bengal against rape and murder of a minor girl in Kaliaganj in West Bengal's North Dinajpur district. The West Bengal BJP President Shrikanta Majumdar said that the protest is against police brutality.
A BJP worker in Varuna, identified as Nagesh, has alleged that he was beaten up by nephews of Siddaramaiah when he was canvassing for the BJP leader V. Somanna in Karnataka. Nagesh, who was injured during the clash, has been admitted to a nearby hospital and is undergoing treatment. A complaint has been filed against Siddaramaiah's nephews. The Chief Judicial Magistrate of Prayagraj Thursday sent slain gangster politician Atiq Ahmed's lawyer Khan Shaulat Hanif to 14 days of judicial custody in the Umesh Pal murder case. The CJM Dinesh Kumar Gautam fixed the 10th of May as the next hearing. You are with Republic TV, and on the other side, the Maharashtra minister hints at a big shake-up in Maharashtra politics. अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब ये आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर, उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी। जो पुरानी सोच और अप्रोच वाले लोग थे वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की जरूरत क्या है, दूसरे देश बना ही रहे हैं, वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सीन दे ही देंगे। लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और परिणाम हमारे सामने है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए। देश की कई प्रतिभाओं ने तब काम का माहौल ना देखकर देश छोड़ने तक का फैसला कर लिया। ये सब उन्हीं सरकारी नीतियों का थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट था। उन नीतियों के इम्पैक्ट ने देश के इनोवेशन, हार्डवर्क और एंटरप्राइज की क्षमता को कुचल दिया। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्ग तक पहुंच पाए, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है।5G का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया है।
ये भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूँ। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। The CBI court to deliver its verdict in the 2013 Jiah Khan death case. D-Day for actor Suraj Pancholi. Neeraj Chopra comes out in support of protesting wrestlers, says their demands must be paid heed to. Maharashtra minister hints at a big shake-up in Maharashtra politics, says that more of Uddhav Thackeray's MLAs are in touch with Eknath Shinde. Operation Kaveri is underway in full swing, India leaving no stone unturned in efforts to bring back every Indian stranded in Sudan. The Defence Minister Rajnath Singh chairs an SCO Defence Ministers meeting in New Delhi, top focus on collective fight against terrorism. Well, the West Bengal BJP has called for a 12-hour bandh in North Bengal to protest against alleged police brutality. The shutdown has been called following the death of the BJP worker Mrityunjay Barman in Radhikapur near Kaliaganj in Uttar Dinajpur district. The BJP has alleged that Mrityunjay died in police firing. So pictures on your screen are of the incident that took place in West Bengal. Let's go across to Bhaskar, who's reporting on this. Bhaskar, give us more details of what the West Bengal BJP is saying about Mrityunjay's death. Well, Nupur, allegedly one young man, Mrityunjay Barman, was killed from the police firing, and Kaliaganj police station they raided in Radhikapur, and allegedly they shot 2 rounds, in which 1 round was shot directly to Mrityunjay as per the family, and they are demanding CBI probe. And also on the other hand, over this Kaliaganj issue, BJP has called for a 12-hour strike in North Bengal. And I'm in Raiganj, just inside the epicenter of this Kaliaganj issue, and all I can say that the closed shops and the blank roads. I would like to ask my Vijay Vishwarup to show some more pictures in Raiganj. This is the prime spot. This is the center spot in Raiganj. The public bus stand, this is empty now, and all we can see that the buses are standing here, and all the shops in Raiganj, in Kaliaganj, and also in different parts of North Bengal is closed for today. BJP has called a 12-hour strike against this Kaliaganj issue, where allegedly one young man was killed by police, and police shot 2 rounds of fire. And also we can see the buses, 1 or 2 buses, they are empty, and we can see the helmet. One helmet is kept just before the driver's seat, so that if anything happens, the driver can protect himself. And दादा ये हेलमेट क्यों रखे आपने? कोई ढील उल मार देगा। स्ट्राइक इसलिए? इसलिए। Well, Nupur, the driver of this government bus, he is clearly stating that he is on the road, but the bus is almost empty, and one helmet is kept just before the driver's seat to protect himself. And the BJP leaders, they are claiming this Kaliaganj issue is nothing but a police brutality. And we can see in the past few hours, clashes erupted in different parts of North Bengal between the cops and the BJP leaders. And BJP MLAs were dragged
by the police while they were protesting against this Kaliaganj issue. In Siliguri, MLA Shankar Ghosh and Anandabai Marman was dragged by the police and they were took into the nearest police station. Also in Raiganj, in Kuch Bihar, BJP leaders were arrested while they were on the roads in support of this 12-hour strike and also demanding judicial CBI probe against this allegedly killing of this Mrityunjay Barman. And also the political controversy is still on. The ruling party in West Bengal, Trinamool Congress, they are claiming that the BJP is doing politics with this murder, and also the police should investigate this thing. And allegedly, one assistant sub-inspector fired 2 rounds on Radhikapur, where they went to arrest a BJP Panchayat Samiti member, but the police didn't find Vishnu Barman, that BJP Panchayat Samiti member, and after that, the police tried to arrest his father and also some other relatives. And while the local public protested against this, the police fired 2 rounds of shots, and in which 1 round was directly entered into Mrityunjay's body, and he was brought dead in Kaliaganj hospital. And also section 144 imposed in different parts of Raiganj and also in Kaliaganj, and the internet services has been suspended by the local administration in all over Kaliaganj. And the situation is still tense like, and the local people, the family members of the deceased, they are demanding CBI probe. They are continuously demanding CBI probe. We spoke to them, and they are claiming that the police fired the shots without any provocation. And the eyewitness, he also claimed that police asked him to go inside his residence and to leave the spot. Otherwise, the police will shoot him. And the eyewitness, what he claimed, is very horrific. And now BJP called for 12-hour strike, and all we can see, the people who are in some emergency, they are in roads, but the most of the shops, most of the people, they are inside their residence, and the 12-hour strike is going on. Over to you, Nupur. All right. Thank you very much for joining us with those details, Bhaskar. So as Bhaskar is pointing out, the tensions continue to remain in that area of West Bengal. Well, almost a decade after the actor Jiah Khan was found dead at her residence in Mumbai, a CBI court will today deliver its verdict in the case. Now, the case will also, of course, be a decider for actor Suraj Pancholi, who has been accused in this case. Pictures on your screen are of Suraj Pancholi now making his way to the special CBI court in Mumbai. We're going to try and go across to Alicia, who's reporting on this. She joins us from Mumbai. Alicia, give us a sense of what we are expecting today. Of course, the CBI court had reserved its verdict in the last hearing. All right, so just to give our viewers a bit of details about this particular case, to remember that Jiah Khan had been found dead at her residence in 2013. Now, Jiah Khan, of course, was a promising actor whose mother says she was in a relationship with Suraj Pancholi, and there was verbal as well as physical brutality in this case. Now, initially, of course, the Mumbai police had called it a case of suicide. Thereafter, there was a CBI inquiry that was ordered in this case. So today, of course, the CBI court will be giving its verdict in connection with her death. Let's go across to Sandeep. He has more details on this. Sandeep, give us a sense of what we are expecting. Of course, in the last hearing, the court had reserved its judgment. Yes, on June 3rd, 2013, Jiah Khan, the Bollywood actor, committed suicide, and in fact, later on, police had registered the case under a potential suicide with section 306 in this case. And Suraj Pancholi, the son of Atiq Pancholi and Jiah Khan, was in fact booked. क्या आज लगेगा सूरज पंचोली कोर्ट से क्या उम्मीद करीना जी आपने जो आरोप लगे क्या मुझे तो नहीं बात करना कुछ कहना चाहिए
बाय बाय Well, that is, of course, Suraj Pancholi, who has made his way to court over there now. We are expecting a verdict in this case. Now, the CBI had begun investigating this case after directions from the Bombay High Court. Jiah Khan, who is the mother of Jiah Khan, had moved the Bombay High Court seeking a CBI probe into the case, alleging that her daughter had been murdered. Do remember that Jiah Khan was found hanging in her home in Juhu in June of 2013. Jiah Khan had also claimed that her daughter, of course, was in an abusive relationship with Suraj Pancholi. Suraj Pancholi and Jiah Khan allegedly started dating in September of 2012. सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में पद्म सम्मान पाने वाले अनेक व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी आदरपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। साथियों, आज के इस आयोजन की एक और खास बात है। ये वंचितों को वरीयता की
सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है। जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों, फल, सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, केमिकल खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा हो, खेती के लिए आधुनिक मशीनों की पुलिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन एफएम ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। इसके अलावा एफएम की जो इंफोटेनमेंट वैल्यू है वो तो होगी ही। साथियों, हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, इसके लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, एफोर्डेबल बनाना, इसका बहुत बड़ा माध्यम है। आज भारत में जिस तरह गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की कीमत इतनी कम हुई है, उसने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को बहुत आसान बना दिया है। आजकल हम देखते हैं देश के कोने कोने में, गांव-गांव में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। इसी तरह जब हमारे छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वाले साथियों को इंटरनेट और यूपीआई से मदद मिली, तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का लाभ लेना भी शुरू कर दिया। आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे मछुआरे साथियों को मौसम संबंधी सही जानकारी सही समय पर मिलती है। आज टेक्नोलॉजी की मदद हमारे लघु उद्यमी अपने प्रोडक्ट्स देश के कोने कोने में बेच पा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से भी उन्हें मदद मिल रही है। साथियों, बीते वर्षों में देश में जो टेक रिवॉल्यूशन हुआ है, उसने रेडियो और विशेषकर एफएम को भी नए अवतार में गढ़ा है। इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं, बल्कि ऑनलाइन एफएम के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए इनोवेटिव तरीके से सामने उभर करके आया है। यानी डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए लिसनर्स भी दिए हैं और नई सोच भी दी है। यही रिवॉल्यूशन आप संचार के हर माध्यम में देख सकते हैं। जैसे आज
देश के सबसे बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश की सेवा 4 करोड़ 30 लाख घरों में पहुंच रही है। देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में, बॉर्डर के पास वाले इलाकों में आज दुनिया की हर सूचना रियल टाइम में पहुंच रही है। समाज का जो वर्ग दशकों तक कमजोर और वंचित रहा, उसे भी फ्री डिश से एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की सुविधा मिल रही है। इससे समाज के अलग अलग वर्गों के बीच असमानता दूर करने और हर किसी तक क्वालिटी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में सफलता मिली है। आज डीटीएच चैनलों पर विभिन्न प्रकार के एजुकेशन कोर्सेज उपलब्ध है। एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटी का ज्ञान सीधे आपके घर तक पहुंच रहा है। कोरोना काल में इसने देश के करोड़ों विद्यार्थियों की बहुत मदद की है। डीटीएच हो या फिर एफएम रेडियो, इनकी ये ताकत हमें फ्यूचर इंडिया में झोंकने के लिए एक विंडो देती है। हमें इसी भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है। साथियों, एफएम ट्रांसमीटर से बन रही इस कनेक्टिविटी का एक और आयाम है। देश की सभी भाषाओं और विशेष रूप से 27 बोलियों वाले इलाकों में इन एफएम ट्रांसमीटर्स से ब्रॉडकास्ट होगा। यानी ये कनेक्टिविटी सिर्फ कम्युनिकेशन के साधन को ही आपस में नहीं जोड़ती, बल्कि लोगों को भी जोड़ती है। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके की एक पहचान है। अक्सर जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे सामने रोड, रेल, एयरपोर्ट की तस्वीर उभरती है। लेकिन हमारी सरकार ने फिजिकल कनेक्टिविटी के अलावा सोशल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी उतना ही जोर दिया है। हमारी सरकार कल्चरल कनेक्टिविटी और इंटेलेक्चुअल कनेक्टिविटी को भी लगातार मजबूत कर रही है। जैसे पिछले 9 वर्षों में हमने पद्म अवार्ड, साहित्य और कला अवार्ड के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों के रियल हीरोज को सामने सम्मानित किया है। पहले की तरह पद्म सम्मान सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि देश और समाज की सेवा के आधार पर दिया जाता है। आज जो पद्म सम्मान पाने वाले साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वो इसे भली भांति जानते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ स्थलों, धार्मिक स्थानों का कायाकल्प होने के बाद एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर लोगों की बढ़ती संख्या देश में कल्चरल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रमाण है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा संग्रहालय हो, बाबा साहब आम्बेडकर के पंच तीर्थ का पुनर्निर्माण हो, पीएम म्यूजियम हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल, ऐसी पहलों ने देश में इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया है। साथियों, कनेक्टिविटी चाहे किसी भी स्वरूप में क्यों न हो, उसका उद्देश्य होता है देश को जोड़ना। 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ना।
ऑल इंडिया रेडियो जैसे सभी कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए भी यही विजन होना चाहिए, यही मिशन होना चाहिए। मुझे विश्वास है आप इस विजन को लेकर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आपका ये विस्तार संवाद के जरिए देश को नई ताकत देता रहेगा। एक बार फिर आकाशवाणी को, देश के दूर दराज के क्षेत्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। 2016 में जब मैं देशवासियों कहता था आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? आपने कुछ समय पहले IMF का एक रिपोर्ट आया जो है, एक वर्किंग पेपर, शायद आपने जरूर देखा। ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसी योजनाओं के कारण महामारी के बावजूद भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म होने की कगार पर है, और यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, तो विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं। भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है। बड़ा काम ऐसे नहीं हुआ है तो इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है, डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। (2014) से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी। कई जगहों पर तो एक दिन के काम के बदले 30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है, यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। इसमें किसका नुकसान हो रहा था? गरीब का, मजदूर का। हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया। अब करीब 90% से अधिक मनरेगा मजदूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। इससे जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा कम हुआ है। मनरेगा में फर्जीवाड़ा रुकने की वजह से 40,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर उसका मालिकाना हक
हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी। जो पुरानी सोच और अप्रोच वाले लोग थे, वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की जरूरत क्या है, दूसरे देश बना ही रहे हैं, वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सीन दे ही देंगे। लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और परिणाम हमारे सामने है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए। Top headlines at 11 a.m. CBI court to deliver verdict in 2013 Jiah Khan death case. D-Day for actor Suraj Pancholi. Neeraj Chopra comes out in support of protesting wrestlers, says their demands must be paid heed to. Maharashtra minister hints at big shake-up in Maharashtra politics, says more Uddhav MLAs are in touch with Chief Minister Shinde. Operation Kaveri underway in full swing, India leaving no stone unturned in efforts to bring back every Indian stranded in Sudan. Defence Minister Rajnath Singh chairs SCO Defence Ministers meet in the national capital. Top focus on collective fight against terrorism. Alright, we start with the big news break that's coming in from Maharashtra in the Jiah Khan death case. We're given to understand that the court is likely to deliver verdict at 12 p.m. The matter has been kept back as Jiah Khan as well as a lawyer are not present in the court as we speak. So stand by for that big verdict. After almost a decade, Special Central Bureau of Investigation Court in Mumbai would be giving its verdict at 12 p.m. in connection with the death of actor Jiah Khan. Remember, the actor was found dead at her residence in Mumbai's Juhu area on 3rd of June in 2013. So the court would be pronouncing its order at 12 p.m. today. And just to give you the background of the timeline in this case, it was on 3rd of June in 2013 when Jiah Khan was found dead at her residence, and since then a lot of allegations, counter allegations that have been made in this case. We're given to understand that the case would be heard by the in fact the verdict would be given by the court at 12 p.m. this afternoon. Remember, it was on 3rd of June that Jiah Khan was found dead based on a letter that was also seized just 7 days later, which was purportedly written by Jiah Khan. The police had booked actor Suraj Pancholi under sections including 306, which is abetment to suicide, and had later arrested him. In October that same year, in 2013, Rabia, the mother of Jiah Khan, had moved to Bombay High Court seeking a CBI probe into this case while alleging that her daughter had been murdered. Jia's mother had also claimed that her daughter was in an abusive relationship with Suraj Pancholi. So a big allegation that was made Rabia Khan back in 2013 that her daughter was physically tortured by Suraj Pancholi. Listen in to a reaction that's also come in from the advocate in this case. See, the prosecution has examined 22 witnesses. Total 22 witnesses examined हुए थे. अभी फाइनल आर्गुमेंट्स हो चुके हैं. ऑनरेबल कोर्ट ने आज जजमेंट के लिए रखा है. तो 313 में उन्होंने क्या बोला और व्हाट इज द जजमेंट, एक आधे घंटे में पता चलेगा. देन विल गिव अ बाइट. So stand by for that verdict. After almost a decade, the CBI court would be pronouncing its order. After 10 years, remember, Jiah Khan was found dead at her residence in Mumbai. On 3rd of June, later a note was also recovered, which was purportedly written by Jiah Khan, and that allegation also that came in from Jiah Khan's mother, which stated that her daughter was in an abusive relationship with actor Suraj Pancholi.
In fact, Jiah Khan's mother had also claimed that her daughter was in an abusive relationship with Suraj Pancholi, and that Suraj and Jiah had allegedly started dating in 2012 in the month of September, and it was later on the order of the Bombay High Court that the CBI had taken over the probe from the Maharashtra police in 2014 in the month of July. Later, we're given to understand Suraj Pancholi was charged on the basis of a 6-page letter that was purportedly written by Jiah that was recovered by the Mumbai police on 10th of June in 2013. The CBI in this case had claimed that the suicide note narrated her relationship, physical abuse and the mental and physical torture that Jiah Khan allegedly went through while she was in a relationship with Suraj Pancholi. And a quick roundup of news and brief from across the country. The BJP has called for a 12-hour bandh in North Bengal against rape and murder of a minor girl in Kaliaganj in West Bengal's North Dinajpur district. The West Bengal BJP president Sukanta Majumdar has said that the protest is against police brutality on common people. A BJP worker in Varuna of Karnataka, identified as Nagesh, allegedly was beaten up by kin of Siddaramaiah while he was campaigning for the BJP in poll-bound Karnataka. The Chief Judicial Magistrate of Prayagraj on Thursday sent slain gangster politician Atiq Ahmed's lawyer to 14-day judicial custody in Umesh Pal murder case. In a bid to boost radio connectivity in the country, Prime Minister Modi inaugurated 91 FM transmitters of 100 watts capacity. Delhi Rouse Avenue Court deferred the pronouncement of the order on the bail of former Deputy Chief Minister Manish Sisodia in the liquor policy case. Meanwhile, the special CBI judge would be pronouncing the order in Jiah Khan death case at 12 p.m. today. Special CBI judge would be pronouncing order in the Jiah Khan death case after almost 10 years. In news from Manipur, where a violent mob set fire to an open gym constructed at a location which was to be inaugurated by Chief Minister Byron Singh. Meanwhile, BJP senior leader K.S. Ishwarappa sparked a controversy after he stopped the Tamil Nadu state song from being played at a campaign meet in Shivamoga of Karnataka. And the 10th batch of 135 Indian citizens who were stranded in conflict-ridden Sudan have successfully departed from Port Sudan on an IAF C-130J flight. And the political rhetoric in the state of Karnataka touched a new low after Mallikarjun Kharge, the Congress chief, hurled abuses at the Prime Minister once again. Remember, in poll-bound Karnataka, Mallikarjun Kharge, while addressing a rally, had called the Prime Minister a poisonous snake. Later, he was of course forced to retract that statement and even rendered an apology after facing that massive backlash. Meanwhile, the incumbent Chief Minister of Karnataka, Bommai, has hit out at Mallikarjun Kharge for the remarks that he had made earlier. In fact, the former Chief Minister of Karnataka has also hit out at Mallikarjun Kharge for the abuses that Kharge has used. Listen in to that reaction that's coming from the former Karnataka Chief Minister B.S. Yediyurappa, who says that nobody will forgive Mallikarjun Kharge and that people will not forgive Kharge for using such remarks and that he should apologize for those remarks. I never expected such a statement. Being a Congress All India President, nobody will forgive him. And first time being a
All India Congress President, such a statement will not good taste, and people will not forget. I will ask him to apologize for this statement. You heard B.S. Yediyurappa seeking an apology from Mallikarjun Kharge. Prajwal, of course, joining us. Prajwal, we understand that Mallikarjun Kharge has, of course, apologized, saying that he did not mean and that his statements were misconstrued. Can we expect the BJP to take this matter up with the Election Commission of Karnataka? Samiksha, in fact, they have already done this. They have already taken up this matter to the Election Commission of India now with the Union Minister Shobha Karandlaje, who late night went ahead and filed a complaint against the AICC President and Congress Chief Mallikarjun Kharge, stating that strict action will have to be taken against him because he's not only attacking an individual from a political party, but he's also attacking the Prime Minister of India, that is Narendra Modi, and therefore it will have to be action will have to be taken. Because of this, he might go on and create a hatred as well, is something which has now been mentioned by the BJP again. And we are also expecting shortly that there will be another delegation of the BJP which will go on to approach the Election Commission and ask them to take campaign. As of now, this particular complaint which has now been given by the Union Minister is already under scrutiny too, because Mallikarjun Kharge, remember, is not only campaigning for the Congress just as a political leader or an AICC president, but he's also on the list of the top star campaigners for the Congress in the party of in the state of Karnataka, and he'll be campaigning in several regions. Even though he has admitted to his fault, even that apology was somewhere he stated that he apologizes for it, but his statements are basically being misinterpreted by the media as well. This is something which he pinned the blame on the media outright, but he was clearly caught out there in the open calling Prime Minister Narendra Modi a poisonous snake, and he's also gone on to state that if you lick it, you will die instantly. So this is something very distasteful over here and below the belt comments, and this will definitely hurt the Congress in the state as well. And Chief Minister Basavaraj Bommai, in fact, now we are getting in reaction here, Samiksha, that he's again spoken in Hubballi today, and he stated that even in the Gujarat elections, the Congress had gone on to target the Prime Minister, and in fact the BJP ended up getting more votes. And this shows how the Congress's personality is, because they treat the people as well, and they only consider them as a vote bank. So all said and done, yes, the complaint has already been filed with the Election Commission, but we are expecting that another delegation of the BJP will shortly be approaching, demanding action against Mallikarjun Kharge and to stop him from campaigning in any other assembly constituency. All right, Prajwal, thank you for the moment. So just a slip of tongue there, the Election Commission of India has taken cognizance, with the BJP now having taken up the matter with the ECI. In this case, let's see how this pans out for the Congress in the upcoming polls. For now, a very short break. Operation Kaveri underway in full swing. India leaves no stone unturned in efforts to bring back every Indian stranded in Sudan. साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्ग तक पहुंच पाए, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। G का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है।
हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला, हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया। ये भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूँ। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। कुछ लोगों को मोदी से इतनी परेशानी क्यों है, और आज इसकी वजह मैं भी रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये जो नाराजगी दिख रही है ना, ये जो बवाल हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की काली कमाई के रास्ते मोदी ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। 2016 में जब मैं देशवासियों कहता था आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? आपने कुछ समय पहले IMF Alright, moving on to news from West Bengal, where the Bharatiya Janata Party has called for a 12-hour protest in North Bengal to protest against the alleged police brutality in the state. Now, the shutdown has been called following the death of BJP worker in Bengal's Dinajpur district. The BJP has alleged that the worker was killed in police firing. So, the Bengal government there in the eye of storm. Let's go across to Bhaskar Basu, who's joining us live from the protest location. Bhaskar, we understand that vehicles have been vandalized at some places, including in Kuch Behar. Who are behind these incidents, and what exactly has been happening in the state of West Bengal? One young man, age of 23 years, Burman, was allegedly killed by police, and police allegedly fired shots towards him while the BJP leader Vishnu Burman, while police was looking for Vishnu Burman, and all we can see here, the RAF parties, the specialized combat forces, have been deployed all along this Uttar Dinajpur district, and the BJP, the main opposition party in West Bengal, they have called for a 12-hour strike in all over the North Bengal, starting from Siliguri toward Malda, all over North Bengal. They have called for the 12-hour strike, and the strike is going on, and we saw in some parts in North Bengal, like in Kuch Behar, like in Siliguri, the MLAs were dragged by the police and they were arrested, they were detained in some places. Some places BJP workers vandalized government vehicles, and I am in Raiganj, the epicenter of this violence in Kaliaganj, and all I can see that the vacant roads. I would like to ask my VJ Vishwarup to show you all over 360 view of this town Raiganj, where all the shops have been closed by their owners. No people is roaming around without any emergency or urgency. The traffic is almost nil. All the roads are being vacant as of now. And a few hours back, BJP workers were arrested by police while they were trying to stop a vehicle. They are trying to stop a bus,
and BJP leaders, they are demanding that the police allegedly killed that young Rajbangshi man, Mrityunjay Burman, and also the family members of Mrityunjay, the deceased. They are claiming CBI probe over this issue because as per the family members, they are questioning the role of police. And if police fires a shot without any provocation, and now thereafter, if that same police will investigate that matter, then how come how come the family will get justice? So they are demanding a CBI probe, and also BJP leader Jiah Khan lodged an application before Calcutta High Court demanding CBI probe in this allegedly killing of the Mrityunjay Burman by the police. And 12-hour strike is going on. As I was telling you, Samiksha, the people, they are supporting this strike, and all the shops are closed and the roads are vacant. And also BJP MLAs, while they were protesting against police brutality, against lawlessness in West Bengal, they have been arrested by the local police authorities. BJP MLA Shankar Ghosh, Anandamai Marwan, and also other MLAs have been arrested as of now. And also the police is taking a close watch over this situation in Raiganj and Kaliaganj. In different parts of Raiganj, Section 144 has been imposed, and also in the Kaliaganj area, the internet services are suspended, and in some parts in Kaliaganj, also CPC 144 had been imposed by the local administration. But the people of Bengal, the people of North Bengal, the people of Kaliaganj, they are demanding a neutral probe by the central agencies. Over to you, Samiksha. Yes, thank you for the moment. So Bhaskar, of course, reporting live. The BJP, they're observing a 12-hour bandh from 6 a.m. Till 6 p.m. of this evening to protest against increasing lawlessness in the state of West Bengal. Moving on then, in a bid to boost radio connectivity in the country, Prime Minister Modi today inaugurated 91 FM transmitters of 100 watts capacity by video conferencing. The 91 new 100-watt FM transmitters have been installed in 84 districts across 18 states and 2 union territories. ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। And it's day 6 of wrestlers' protest. Olympian Neeraj Chopra comes out in support of the wrestlers as they protest against the former WFI chief Brijbhushan Sharan Singh. –2014 से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी।
कई जगहों पर तो एक दिन के काम के बदले 30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है। यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। इसमें किसका नुकसान हो रहा था? गरीब का, मजदूर का। हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया। अब करीब 90% से अधिक मनरेगा मजदूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। इससे जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा कम हुआ है। मनरेगा में फर्जीवाड़ा रुकने की वजह से 40,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर, उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी। जो पुरानी सोच और अप्रोच वाले लोग थे वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की जरूरत क्या है, दूसरे देश बना ही रहे हैं, वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सीन दे ही देंगे। लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और परिणाम हमारे सामने है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए। देश की कई प्रतिभाओं ने तब काम का माहौल ना देखकर देश छोड़ने तक का फैसला कर लिया। ये सब उन्हीं सरकारी नीतियों का थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट था। उन नीतियों के इम्पैक्ट ने देश के इनोवेशन, हार्डवर्क और एंटरप्राइज की क्षमता को कुचल दिया। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्ग तक पहुंच पाए, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है।5G का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा,
Well, good morning and welcome back. This is Live and Breaking on Republic TV. I'm Nupur Talwar Suri, and the focus continues to remain on the protests that are taking place at Jantar Mantar. Now, a new backing has come in from the Olympic gold medalist Neeraj Chopra, who has said that he thinks that athletes need to be treated better and that this issue needs to be resolved. We'll have more on that story in just a bit. The headlines at 11:30. The CBI court is to deliver its verdict in the 2013 Jiah Khan death case. It is D-Day for actor Suraj Pancholi. Neeraj Chopra comes out in support of protesting wrestlers, says their demands must be paid heed to. Maharashtra minister hints at a big shake-up in the Maharashtra politics. He says more Uddhav MLAs are in touch with Shinde. Operation Kaveri underway in full swing. India leaving no stone unturned in efforts to bring back every Indian who's stranded in Sudan. And Defence Minister Rajnath Singh chairs SCO Defence Ministers meeting in New Delhi. Top focus on collective fight against terrorism. Well, as yet another day of wrestlers' protest continues in the national capital, the Olympic gold medalist Neeraj Chopra has backed protesting wrestlers. He tweeted in their support, saying that it hurts to see athletes on the streets. The issue must be dealt with in a different way and that authorities must act promptly. Now, this comes, of course, at the back of PT Usha, who was speaking to the wrestlers, coming out and calling the wrestlers hitting the streets indiscipline. On the other side, of course, we have seen the fact that the Supreme Court will be looking into the matter today. Earlier on, of course, the court had asked the Delhi police to file an FIR. In fact, the court had questioned why an FIR had not been filed in allegations of sexual misconduct by Brijbhushan Singh. Let me go across to Madhurima, who is reporting in the national capital. Madhurima, we have seen a lot of back and forth in this particular case. Now, of course, athletes from across the country have been coming out in support of these wrestlers. But as far as the association, the Wrestling Federation itself trying to sort this issue out, we haven't really seen much headway being made. And why is that? Well, it's absolutely Nupur, because as far as the Wrestling Federation is concerned, they are all awaiting the Supreme Court order. We have tried to speak to Brijbhushan Singh as well, but his men say that till the time the court says or delivers any kind of verdict or direction, they will not speak. I'll take you to the visuals over here as I speak, and as you can see that a lot of support has poured in here at Jantar Mantar for the wrestlers who continue to protest. You can see how the barricading has been done. Also, multiple beddings have been laid on the floor, because it is since Sunday. It's been around 6 days that the protest, the wrestlers here, the Olympic winners, the Commonwealth game medal winners, all of them have been lying here and camping here day in, day out for past 6 days. And as far as any way through is concerned, the wrestlers are saying that they waited for 2.5, around 3 months, but no progress has been made as far as their demands are concerned. And one of the main demands, because of which they are forced to come here and sit in protest, is that the Delhi police is not registering an FIR against Brijbhushan Singh. The Delhi police, though, is saying that that would need an investigation in the matter. However, they have also highlighted the fact that if the court orders, they will do so. But here the wrestlers are saying that looking at the kind of offense that these girls and that two wrestlers that are pride of the nation, including one minor, has kept forth in front of the Delhi police officials. It is highly worrisome that the Delhi police officials have not taken the cognizance till now. And with Neeraj Chopra's tweet coming in, that has only provided impetus to this entire protest, because the wrestlers here
here initially, remember Nupur, in the month of January, had not invited anybody. They were like that, we do not want any political support, we do not want any support from the Panchayat, we just want to send out a message to the government. But this time in, they are saying that they lack power, and the way the promises, none of them have been made according to the wrestlers, have not been fulfilled, I beg your pardon. So it is on the government side now, and now they're saying that they're inviting everybody, and they're inviting maximum support here at Jantar Mantar. Now all eyes on the court, Supreme Court, Nupur, where this matter will be heard, and we'll see that if this entire case makes a way ahead or not. All right, do stay with us, Madhurima. Of course, the court had issued a notice the last hearing to the Delhi police asking for it to reply to why an FIR has not been filed. So we'll have to wait and watch for what happens in court today. But the protesters, of course, are continuing to stay at the Jantar Mantar. In fact, they're training there even as they continue protesting. Here's what Bajrang Punia said earlier this morning. देखिए, मैं धन्यवाद बोलता हूं क्योंकि ये एक कुश्ती की लड़ाई नहीं है, ये भारत की सभी उन खिलाड़ियों की लड़ाई है जो आज सभी इकट्ठा होकर लड़ सकते हैं, क्योंकि भारत की बेटियों का शोषण किया जा रहा है, खेल का शोषण किया जा रहा है। अगर आज हम इकट्ठा होकर नहीं लड़े तो ऐसे ऐसे लोग आगे आते रहेंगे और भारत की बेटियों का और भारत के खेल का ऐसे ही शोषण करते रहेंगे। ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है, कितनी उम्मीद आपको? देखिए, हमें उच्चतम न्यायालय से पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने चंद्रचूड़ सर के बारे में जितना भी सुना है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, जितना भी हमने सुना उनके बारे में, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। ने कल जो बयान दिया पीटी उषा जी ने, उसके बयान को देखिए, बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि वो एक खुद अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, हमारे आइकॉन हैं, और उसके बाद भी वो ऐसी ऐसी चीज़ें खुद महिला होकर महिला खिलाड़ियों के बारे में बोल रही हैं, और वो अनुशासनहीनता का बता रहे हैं कि भाई वो बैठे अनुशासनहीन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैडम कि आप ये बताइए कि जब आपकी एकेडमी और आपके स्कूल को तोड़ा जा रहा था, तब आप ट्वीट कर रहे थे, तब देश की गरिमा को कोई आँच नहीं आ रही थी, जब भी तो देश की गरिमा पे आँच आ रही थी, जब कोई अनुशासन की बात नहीं थी। जब आपके पास तो पावर है, जब आपके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है, हमारे पास तो जो देश की जनता वही हमारी ताकत है। Now, in fact, at the Republic Summit, the Sports Minister Anurag Thakur had spoken about the wrestlers' protest. He said that the process will be followed. मैंने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके मैं एक बार नहीं 12 घंटे इनके साथ स्वयं बैठा, इनकी बातें सुनी। एक कमेटी का गठन करेगी जो खिलाड़ियों का चयन भी करेगी और वही उनका डे टू डे अफेयर्स तब तक रन भी करेगी, और जब इनकी बॉडी बनती है तो नई संस्था बनने के बाद इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हो, बेहतर रूल्स इनके अंतर्गत उन सबको सुनिश्चित करने के लिए इनको आदेश पारित किया है। जहां तक सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस की बात है या मेंटल हरासमेंट की बात है, उनकी भी डिटेल इंक्वायरी हुई, और डिटेल इंक्वायरी के बाद अभी भी अगर आप देखोगे दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में भी कहा है, सरकार ने कहा है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद अगला जो भी कदम उठाना होगा वो उठाएंगे। उसकी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को ना मैं जंप कर पाऊंगा ना आप कर पाओगे, लेकिन जो निष्पक्ष चुनाव सबसे पहला कदम था कराना कि एक नई संस्था चुनकर आए, एक नई बॉडी चुनकर आए, उस कदम से शुरुआत कर दी गई। मैं आपकी बात Now, the Karnataka Chief Minister has hit out at the Congress party over abuse politics. He says that people will teach the Congress a lesson for abusing the Prime Minister. Do remember that this is the controversy that broke out over Mallikarjun Kharge's remark where he had spoken about a poisonous snake. Of course, thereafter he did come out and say that it wasn't aimed at the Prime Minister. However, he also said that if it has hurt people's sentiments, I apologize for it. But Baswaraj Bommai over there saying that the people of Karnataka will teach a lesson to the Congress party over this abuse for the Prime Minister. Let's listen in to the comment that was made by Baswaraj Bommai. Congress ಹತಾಶರಾಗಿ ತಮ್ಮ 100 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅವರು ಗತಕಾಲದ ಅಧಿಕಾರದ ಮದದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು
ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು, ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಡೀತಿದೆ, ಜನ ಏನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನೋವಾಗಿರುವಂಥ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೈಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಮೋದಿಯವರು ಹೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. मुख्यमंत्री अधिक स्वागत करते हैं पार्टी के अंदर, और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे भी खुशी का क्षण है क्योंकि अजय आलोक जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है पार्टी के अंदर। आप सब जानते हैं जनता दल यू में आप प्रवक्ता रहे और टेलीविज़न चैनल्स में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में लगातार आप लोग देखते ही हैं। बहुत ही प्रखर नेता हैं हमारे बिहार के, हम उनका स्वागत करते हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया जी और श्री जफर इस्लाम जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह करूंगा कि अजय आलोक जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर उनका स्वागत करें। स्वागत पार्टी में आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह है कि इस अवसर पर मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आप सबने टीवी चैनल्स पे आलोक जी को एक प्रखर चिंतक के रूप में देखा है। बहुत ही शार्प एनालिसिस होता है इनका, लंबी राजनीतिक पारी है, बहुत लंबे समय से एक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, 2005 से लेकर आज तक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है समाज में, चिंतन में, विकास की जो थॉट प्रोसेस है उसमें। तो आज अजय आलोक जी का बहुत हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा जो हमारी विचारधारा के साथ जुड़ के काम करना चाहे, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना को ही अपनी भावना माने, जो गरीबों के लिए अपने जीवन को सर्वस्व करने के लिए तैयार रहे और जो विकास को अपनी ज़िंदगी की यात्रा माने, ऐसे सभी साथियों का हमेशा स्वागत रहता है। साथियों, अजय जी डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। बहुत अच्छा है कि एक प्रोफेशनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह की आज की जनरेशन को एस्पिरेशन रहती है, आज के हमारे जनसंख्या, हमारे नागरिकों की जो एस्पिरेशन रहती है, उन एस्पिरेशंस को, उन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक फील्ड में नए डेवलपमेंट्स, नई विकास की सोच, एक नया थॉट प्रोसेस, एक नया माइंडसेट लेके आ रहे हैं। उसमें, उसी जर्नी में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा वैल्यूएबल रहेगा और समाज की सेवा की जो आपने जर्नी अब तक की है उसमें एक ये महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा। धन्यवाद आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी। अब मैं डॉक्टर अजय आलोक जी से आग्रह करता हूं कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। यहाँ उपस्थित मीडिया बंधु, हमारे साथ बैठे भारत सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी, पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम जी, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हमारे गौरव भाई,
आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में, मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में ही आया हूं। एक ऐसा परिवार जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी नीतियों से मैं तो क्या पूरा देश प्रभावित है, और आज देश उसी दिशा में बढ़ रहा है जिसमें मोदी जी बढ़ रहे हैं। आज ज्यादा बोलने का दिन नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गृह मंत्री, उन सब की प्रेरणा से ये पार्टी आगे बढ़ रही है, और सबका मार्गदर्शन और नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। अश्विनी जी ने पहले ही काफी कुछ बता दिया है कि इस पार्टी का मोटो क्या है, समर्पण किसके प्रति है, गरीबों के प्रति है, काम किसके प्रति करना है, वंचितों के प्रति करना है, सोच किसकी है, मोदी जी की सोच है। मैं कोशिश करूंगा, अगर 1% भी मेरा योगदान इस मोदी मिशन में हो सका तो यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद पांडे जी, आप कुछ बोल रहे थे? सर एक सवाल था कि हम लोगों ने देखा कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में उसमें करोड़ों खर्च किए गए, उसको और आलिशान बनाने के कुछ नए डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें ये पता चला कि उनके घर के जो सरकारी आवास, उसके अगल बगल कुछ बंगलों को, घरों को छोड़कर उसको विस्तारित करने की योजना है, और मकसद ये है कि उसको जैसे लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री का निवास है, वैसा सीएम के आवास को बनाया जा सके। साथियों, जिस तरह से देश को केजरीवाल जी ने एक तरीके से धोखा दिया है, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका विपरीत किया, तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि वो अपनी इच्छाएं जो उनकी है उनको पूरी करने के लिए किसी भी नियम को, किसी भी कानून को, किसी भी प्रॉपर्टी को वो तोड़ सकते हैं। ऐसा उनका, आज की जनता उनको, उनकी सच्चाई जान गई है। आज जन जन में एक क्लैरिटी आ गई है कि किस तरह से दिखावा कुछ और था, रियलिटी कुछ और है। सर, एक और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया प्रधानमंत्री को लेकर। All right, so Ajay Alok, the former leader from the JDU over there joining the BJP, do remember that Ajay Alok was expelled from the JDU. ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, मौत के सौदागर। कांग्रेस के अंदर जिस तरह का कल्चर है, जो उनकी भावना है, जो उनकी नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग है, जो उनका माइंडसेट है, उस माइंडसेट को क्लियरली खड़गे जी ने अपने शब्दों में रखा। देश लेकिन मोदी जी पे स्पष्ट विश्वास रखता है। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नेता ऐसा नहीं आया जिसकी इतनी स्ट्रांग मॉरल अथॉरिटी हो। अथॉरिटी बहुत लोगों की होती है साथियों, अथॉरिटी पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, ऑफिशियल अथॉरिटी होती है, मॉरल अथॉरिटी नरेंद्र मोदी जी की है। आज जन जन में जो विश्वास है मोदी जी के प्रति, वो एक कॉल देते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। लोगों को विश्वास है कि ये व्यक्ति देश को सही राह पे ले जाने वाले नेता हैं। तो चाहे खड़गे जी कुछ भी बोलें, उनकी जुबान उनको मुबारक। राष्ट्र योग में, राष्ट्र के निर्माण के इस यज्ञ में मोदी जी और उनके सब अनुयायी हम सब चलते रहेंगे। All right, so that of course was Ashwini Vaishnav over there remarking over the comments that were made by Mallikarjun Kharge. Do remember that Mallikarjun Kharge's poisonous snake remark against the Prime Minister essentially has drawn sharp reactions from the BJP. We also saw a reaction that just came in from Baswaraj Bomai earlier. You are with Republic TV, and coming up next, Operation Kaveri is underway in full swing. India leaves no stone unturned in efforts to bring back stranded Indians. And Defence Minister Rajnath Singh chairs the SCO Defence Ministers meeting in the national capital. कुछ लोगों को मोदी से इतनी परेशानी क्यों है, और आज इसकी वजह मैं भी रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूँ।
ये जो नाराजगी दिख रही है ना, ये जो बवाल हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की काली कमाई के रास्ते मोदी ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। 2016 में जब मैं देशवासियों कहता था आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? आपने कुछ समय पहले IMF का एक रिपोर्ट आया जो है, एक वर्किंग पेपर, शायद आपने जरूर देखा। ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसी योजनाओं के कारण महामारी के बावजूद भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म होने की कगार पर है, और यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, तो विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं, भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है। बड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है तो इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है, डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। The BJP has called for a 12-hour bandh in North Bengal against rape and murder of a minor girl in Kaliaganj in West Bengal's North Dinajpur district. Now, the West Bengal president of the BJP, Sukanta Majumdar, has said that the protest is against police brutality. A BJP worker in Varuna, identified as Nagesh, alleged that he was beaten up by nephews of Siddharamaiah when he was canvassing for the BJP leader V. Somanna at Siddharamanna Hundi. Now, Nagesh was injured in the clash and has been admitted to a nearby hospital. And still to come, a CBI court will be delivering its verdict in the 2013 Jiah Khan death case. In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Khargpur and Amity University. देश की कई प्रतिभाओं ने तब काम का माहौल ना देखकर देश छोड़ने तक का फैसला कर लिया। ये सब उन्हीं सरकारी नीतियों का थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट था। उन नीतियों के इम्पैक्ट ने देश के इनोवेशन, हार्डवर्क और एंटरप्राइज की क्षमता को कुचल दिया। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है
उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्ग तक पहुंच पाए, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। फाइव जी का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया। भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूं। The CJM in Prayagraj on Thursday sent slain gangster politician Atiq Ahmed's lawyer Khan Saulat Hanif to 14 days of judicial custody in Umeshpal murder case. In a bid to boost radio connectivity in the country, Prime Minister Modi inaugurated 91 FM transmitters of 100-watt capacity via video conferencing today. You are watching Republic TV, and still to come, we bring you the latest on the Jiah Khan death case that comes up in a CBI court today. In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Khargpur and Amity University. इतना बड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है तो इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी। कई जगहों पर तो एक दिन के काम के बदले 30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है, यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। इसमें किसका नुकसान हो रहा था? गरीब का, मजदूर का। हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया। अब करीब 90% से अधिक मनरेगा मजदूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। इससे जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा कम हुआ है। मनरेगा में फर्जीवाड़ा रुकने की वजह से 40,000 करोड़ रुपए
गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब ये आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, A CBI court is to pronounce its verdict in the probe against Suraj Pancholi in the Jiah Khan death case. Controversy over poisonous steak comment gets bigger. The BJP says abuse will backfire for the Congress. The restless protest enters its 6th day. Gold medalist Neeraj Chopra comes out in support, seeks early resolution. Maharashtra minister hints at a big shake-up in Maharashtra politics, says more Uddhav Thackeray MLAs are in touch with Eknath Shinde. The ex-JDU leader and Nitish aide Ajay Alok joins the BJP in presence of the Union Minister Ashwini Vaishnav. Bengal BJP calls for 12-hour bandh in Bengal in protest over law and order situation in Mamata government. Well, after almost a decade, a special court of the CBI in Mumbai is likely to give its verdict in the death of actor Jiah Khan. Today, the actor was found dead at a residence in Mumbai on the 3rd of June in 2013. The court is scheduled to give its verdict at about any time now. In fact, 12 o'clock was the time that was given by the special CBI court. Now, do remember that in this particular case, the Bombay High Court had ordered for a CBI probe. And thereafter, of course, the CBI had taken over the investigation. Alisha is joining us right now on the broadcast. Alisha, we are expecting the verdict to come anytime soon. But for our viewers, take us through the several twists and turns that this case has taken. There was an application that was filed by Jiah Khan yesterday. All right, I'm afraid that's a very poor audio connection that we have with Alisha over there. We'll get her back in just a bit. But as I was earlier pointing out, of course, there have been many twists and turns in this case from the fact that, from the point that this death actually took place. At that point in time, of course, the Mumbai police had said that it looked like suicide. So it was essentially abetment to suicide that Suraj Pancholi is in the dock for. Also, we are given to understand that there has been another application that has been filed by her mother, Rabia Khan, where she says that the investigating agencies have not been able to collect enough evidence in this case. So we have seen in the past also, Rabia Khan, of course, has gone to the Bombay High Court, and that is when the Bombay High Court had actually ordered a CBI inquiry into this. But now she has come out and said that both investigative agencies have not been able to collect legal evidence or to prove that this was a mere case of suicide. And the first informant believed it is a murder case and the accused is responsible for killing her daughter. Swapnil Kothari is with us on the phone line. Good afternoon, Swapnil. Swapnil, this case, of course, has seen many twists and turns. Now, even as we are awaiting the verdict to come out from the CBI court, Rabia Khan, the mother of Jiah Khan, seems to suggest once again that she believes that the investigation has not been carried out in a proper manner. How do you see this?
Well, I think Rabia Khan is absolutely right. I think, and I would not sound cliched if I said that the mother knows best. But on the evidence that has been pointed out and that is there for people to see, it clearly suggests that the investigation by the Mumbai police appeared to be flawed. And that is the reason why the CBI was brought into the picture. And assuming that the CBI wants to change it to 302, that is murder, then I think, that is where the proper result would lie. And let us wait for the CBI verdict. But I believe that some investigations must have thrown light to the CBI, and if the CBI wants to come out with something more detailed, and especially the CBI court, because that is what we are waiting for today, then I think this is something which which will be an eye opener for many people, and not for those who possibly know about it a lot, because it replicates very much the other murders that have taken place thereafter. Or should I say, I will not, to be technically correct, I will say inexplicable deaths or unexplained deaths, that have taken place thereafter. And most of them have been pushed off as suicide, when actually they should, have been gone into a little bit more in detail, and maybe the result would have been different. So, Nupur, I think this is something which requires a little bit of spine and a little bit of teeth. And then, we'll all see what happens with the court. And then, of course, if the court decisions are not satisfactory, there are always appeal courts. Oh yes, absolutely. We'll have to be waiting for that verdict to come out. But Rabia Khan essentially in that letter seems to indicate that she's not very happy in the manner in which that this probe has been conducted. All right. Alisha also joining us. Swapnil, do stay with us. We'll come back to you in just a bit. Alisha, give us a sense of what's happening right now. Now, of course, we earlier saw the main accused in this case essentially go to court. We had pictures of Suraj Pancholi make his way to court. We are expecting the verdict to come out anytime soon now. Well, yes, the court is to deliver the verdict at 12:30 is what court has mentioned, because when court informed that yesterday when Rabia Khan has come to the court and she had filed some submissions for that, even she was asking for the hearing. But the other party which has clearly mentioned that this is not a stage to file an application and we should ask for the hearing. But if I read out some of the important points that has been mentioned in the submission that is filed by Rabia Khan, which stated that the both investigating agencies has never collected legal evidence to or proof to say that this was a mere case of suicide, and this was the first informant believed is a murder case, and the accused is responsible for killing her daughter. Not only this, but also mentioned that evidence of the first informant highlights various instances of abuse, physical and mental, by the accused during the relation with the deceased as well, which clearly indicates the violent nature of the accused, which was supported by the witness Manika Harisinghani. However, she turned hostile. So this is the submission that was made by Rabia Khan yesterday, and she was even requesting for the hearing. But today, where the court is all set to deliver its verdict in a decade, all we can say, it was almost a decade where the court is about to deliver its verdict. But even the court has said that they are not going to hear any submission that has been, the written submission that is filed by Rabia Khan, and now the court is to deliver its verdict at 12:30. Suraj Pancholi, along with his mother Zarina Wahab, have already reached the court. Even the legal team of Suraj Pancholi is inside the courtroom number 52, and the special CBI judge A.S. Syed, who is going to deliver its verdict, as well as what we know that even Rabia Khan is to reach the court, after which the court will deliver its verdict. All right, so we are of course awaiting that verdict to come in. 12:30 is the time that we are now hearing about at this point in time. Rabia Khan has still not reached the courtroom. Now, Swapnil of course continues to be with us. Swapnil, in the past of course Rabia Khan had gone to the Bombay High Court again asking for some sort of an, had asked them to come back and look at the inquiry, but the Bombay High Court had refused to do that. And today also what we understand is that the court has said that it will not hear any submission. So legally, how do you see this going forward now?
Well, I believe if the submissions must have already been made, that is the reason why the court is saying that, let's not waste further time on submissions and we'll get back to you with the order. So whatever the order comes, we'll have to accept it. And, more often than not, we don't like orders that come our way. But that's the way the judicial system works. And every time that you cannot expect some things to go your way. But I believe in here, at least from what must have been presented or what must have been submitted, Rabia Khan would not be wrong in hoping for the best. So I believe, I would rather comment more on, when the verdict comes out rather than presume something, and say something, because that will be doing just injustice to not only Rabia Khan or even the other side, but even to the viewers of Republic TV. Because I pretty much can envisage as to what the court verdict could be, but I don't want to, presume and then, say something and, then thereafter, sort of analyze something, this should have been that way or that could have been this way, things like that. But I'm pretty, all I can say is that I hope that Rabia Khan, please do not go unanswered. Because this is a tough battle, it's a battle for justice. And I think when investigations are flawed, especially by the state police and the central police, as if I may use that word, which is the Central Bureau of Investigation, has to do some justice. Right, absolutely. Also, very, very quick question from you, Swapnil. It's already been 10 years, since this incident actually took place. Now, we've seen a lot of back and forth in it. In 2016, the CBI had ruled out any foul play and it had told the High Court that Jiah Khan died by suicide. After that, once again, it was reassigned, the case was reassigned to a CBI court. So, legally it has been almost 10 years for Jiah Khan's mother. It has been a very, very long time in terms of, closure in this case, hasn't it? Well, absolutely. And court cases drag long. And, as the joke goes, that, basically when the grandfather started, the grandsons ended. So, I hope this doesn't happen here. And, even if the CBI court had come out saying that it's a rebatement to suicide and it's not a murder, I believe that if Jiah Khan's mother has given some new evidence to that effect within the interregnum period, then I believe the CBI needs to look at it a little bit more seriously. And I hope that, the CBI court does justice, as I said. Although it's a little, salty to, take back its own verdict or take back its own initial observation. But I believe people are mature or agencies are mature enough to say that, well, that was then and that was that officer or whatever it is. And it is now, and this is what the evidence has come to light. So we believe that it's otherwise. So let's hope. I can only hope for the best, and I'm there with you guys. So, not to worry, but let's wait for the verdict. That's all I can say. Absolutely. Swapnil, for the moment, thank you. We'll come back to you once the verdict is out. I'm going to quickly go back across to Alicia on the ground. Alicia, there have been several twists and turns in this case. Now, what's very interesting, of course, is that in 2018, the special CBI court had rejected the plea for a further investigation into the case related to Suraj Pancholi. Then it went to the Sessions Court. The Sessions Court said we have no jurisdiction over a CBI inquiry. And then now it is with the special CBI court. So take our viewers through why this case has taken so long. Well, as far as this case is concerned, so it's on 3rd of June 2013 when Jiah Khan found hanging toward the ceiling in an apartment in Juhu, after which there was a police inquiry which was ongoing. And Rabia Khan, who's the mother of Jiah Khan, has filed an application before the Bombay High Court seeking CBI investigation into the case, because she has clearly mentioned that her daughter was not, she did not commit suicide, but it was a murder. And Suraj Pancholi, who was in relation with Jiah Khan, is the accused in this case, and he is the responsible. He should be held responsible for killing her daughter. And in 2014, it's July 2014, when Bombay High Court has transferred the case from Maharashtra Police to CBI, and even after the 3 years of intense investigation, where the CBI has reconfirmed that it was a case of a suicide, Jiah Khan has committed suicide after the autopsy and the evidence, specifically even the post-mortem report as well as the autopsy, when there are
report that has come across, and there are around 22 witness statement that has also been recorded by the Central Bureau of Investigation. And in 2017 is what we know that CBI has reconfirmed that it was a suicide. But even after that, her mother Rabia Khan was continuously seeking justice and clearly mentioning that it was not a suicide, it was a murder. And she has also approached the Bombay High Court as well as the Suraj Pancholi has also mentioned that it was a false allegations and the baseless statement that has been made by her mother. Because what has been mentioned in the application that was given by Rabia Khan, stating that she was abused mentally and physically, she was harassed, and which is why this has the step that has been taken by Jiah Khan is only because of Suraj Pancholi, and he should be held responsible for killing her daughter. But it was the case that was a suicide that was continuously looking at her. But what we know in 2017 itself, where 306, that is abatement of suicide, that has been invoked in Suraj Pancholi. All right. Thank you very much for the moment, Alicia, for joining us. Alicia, of course, is reporting from outside the CBI court, where we are expecting a verdict to come in the Jiah Khan death case. Well, abuse politics, of course, is peaking in Karnataka after the Congress chief called Prime Minister Modi a poisonous snake. A BJP MLA has called Sonia Gandhi a wish kanya. So obviously politicians deciding to stoop to low levels in this case. We are given to understand that this is the BJP MLA from Basan who has made this remark against the ex-Congress President Sonia Gandhi during a speech at Koppal in Yatnal. He called Sonia Gandhi a wish kanya. And called her a Pakistani and a China agent. So we're going to try and play out that bite for our viewers in just a bit. But the BJP MLA calling Sonia Gandhi an agent of Pakistan and China, also going on to call her a poisonous snake. I beg your pardon, a wish kanya. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡದ. ಅಮೇರಿಕಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ. Prajwal, politics in Karnataka seems to be hitting a new low with these personal comments that seem to be coming in from both sides. We just had a BJP MLA over there from Basan making, speaking out against Sonia Gandhi, calling her a wish kanya, which essentially means a venomous woman. Absolutely. Now Karnataka politics, especially from all the political parties, has entered into quite a low level as well, because below the belt statements repeatedly being made. First it was the Congress by the AICC president. Now we are seeing a BJP MLA in the form of Basangauda Patil Yatnal, who is calling Sonia Gandhi a Vishakanye. So the whole agenda is now shifting with the BJP and the Congress targeting and making only personal comments against their leaders too. And this is something which definitely does not bode well for the people of Karnataka, because there are several issues, there are several agendas that they should be concentrating on. But now abuse politics have entered an all-time low here. And also if we're looking at it now, Basangauda Patil Yatnal has not stopped there. He's also gone on and stated that she's an agent of Pakistan and China too. And this has been something which is creating a lot of ripples. Now the Congress are also going hard after the BJP, stating that the sort of disrespecting comments that is coming in against the former AICC president is definitely uncalled for. But we should also understand over here that he is, somewhere Basangauda Patil is posing in a question, but at the same point of time, his tone and tenor is in such that he's trying to instigate the people also to follow as to what he is speaking on. So this is absolutely horrible out here. It's a pathetic
state of affairs out here, and this was least expected. But the Congress will also now definitely go in and cash in on this statement by this MLA Basangowda Patil Yatnal, Nupur. All right. What's going to be interesting, Prajwal, is to watch out for how the Congress reacts to this, because I do remember that it was Mallikarjun Kharge who actually began this diatribe essentially with the comments that he made against the Prime Minister. Absolutely. Mallikarjun Kharge was the one who started off, because somewhere Kharge stated that he will be the last person to be going out and making personal statements. But it started off from the Congress chief himself, who went ahead and made these statements. And also, Nupur, the Congress had been completely silent about this entire issue. They chose to keep silent, they chose to keep mum and did not respond. Neither the KPCC president nor Mr. Sidramaiah, none of them have responded. But now we can expect that the Congress will start hitting out at the BJP for this. So everybody will now be questioning the double standards of the Congress party, but at the same time they will also question the BJP as to whether they are morally in a right ground to go ahead and raise this issue as well. Right, but yes, right. the Congress was the one who kick-started this, but this is again blaming who is right and who is wrong here. And comments like this one, of course, do take away from the real issues on the ground. I'm going to go back across, and we are going to play out that comment that came in from the BJP leader. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಜೆಂಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ. Well, so pictures on your screen are of the two people who seem to have started a personal attack campaign in Karnataka. Mallikarjun Kharge, the Congress president, of course, began with his comment against the Prime Minister. Now a response coming by the BJP leader from the BJP calling Sonia Gandhi Vishkanya. You are watching Republic TV, and coming up next, controversy over the poisonous steak comment gets bigger. The BJP says the abuse will backfire for the Congress. And wrestlers are protesting in Jantar Mantar. Their protest enters day 6. ये भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूँ। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। कुछ लोगों को मोदी से इतनी परेशानी क्यों है, और आज इसकी वजह मैं भी रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये जो नाराजगी दिख रही है ना, ये जो बवाल हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की काली कमाई के रास्ते मोदी ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। 2016 में जब मैं देशवासियों कहता था आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक
डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं। आपने कुछ समय पहले IMF का एक रिपोर्ट आया जो है, एक वर्किंग पेपर, शायद आपने जरूर देखा। ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसी योजनाओं के कारण महामारी के बावजूद भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म होने की कगार पर है, और यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं, भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है। बड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है तो इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थी। As many as 7 uniformed personnel were seriously injured in an ambush by attackers led by a known history sheeter in Udaipur. The police personnel were attacked with knives and sticks and were also shot at while they were out to catch a history sheeter. The main accused is wanted in several criminal cases, including in connection with a month-old incident in Mandwa. All the injured police personnel are currently undergoing treatment at a local hospital. None of the accused have been arrested so far. Bureau Report, Republic TV. जो पुरानी सोच और अप्रोच वाले लोग थे, वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की जरूरत क्या है, दूसरे देश बना ही रहे हैं, वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सीन दे ही देंगे। लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और परिणाम हमारे सामने है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए। देश की कई प्रतिभाओं ने तब काम का माहौल ना देखकर देश छोड़ने तक का फैसला कर लिया। ये सब उन्हीं सरकारी नीतियों का थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट था। उन नीतियों के इम्पैक्ट ने देश के इनोवेशन, हार्डवर्क और एंटरप्राइज की क्षमता को कुचल दिया। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्ग तक पहुंच पाए, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है।
news break that just coming in. Suraj Pancholi, who's now been acquitted by the CBI court. Now, this is in relation to the Jiah Khan case on which the CBI court has pronounced its judgment. Remember, Jiah Khan is of course found dead at her Mumbai residence on 3rd of June. In 2013, the matter, the verdict for which was pronounced by the court. We're given to understand Suraj Pancholi has been acquitted by the court in this matter. Let's take a word from Alisha also, who's reporting live from outside the court. Alisha, that's of course relief for Suraj Pancholi, but tell us the arguments that were presented earlier in the court and what can we expect next in this case? देखिए, फिलहाल जहां तक देख रहे हैं कि सूरज पंचोली को इस केस से बरी कर दिया गया है। खास तौर पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट की ओर से ये बताया गया है कि लैक ऑफ एविडेंस के वजह से इस कोर्ट में जहां कोर्ट के ये डिसीजन लिया जाता है कि सूरज पंचोली को केस से बरी किया जाए। तो ये डिसीजन हम देख रहे थे कि पिछले 10 सालों से जहां पर ट्रायल चल रहा था और कई ऐसे एविडेंस जहां पर खुद राबिया खान की ओर से भी सामने रखे गए थे, लेकिन अब कोर्ट ने जहां पर सूरज पंचोली को विटनेस बॉक्स में बुलाया था, जहां पर उनसे नाम पूछा गया, इतना ही नहीं लेकिन साफ तौर पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट जज एएस सैयद ने जब वर्डिक्ट को प्रोनाउंस किया तो साफ तौर पर यह कहा कि एविडेंस के न होने के वजह से, जो एविडेंस सूरज पंचोली के खिलाफ न होने के वजह से इस केस से उनको बरी किया जाता है। यानी जहां एक तरफ 306 का जो सेक्शन है, जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो सेक्शन लगाया गया था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पे ट्रायल जो है वो स्पेशल सीबीआई कोर्ट पर चल रही थी। ये पूरा मामले को अगर हम देखें तो 3 जून 2013 को जहां पर जिया खान का सुसाइड हमने देखा था कि जुहू के अपार्टमेंट में जहां पर पंखे से लटक कर उनकी जहां पर डेथ हो गई थी, उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया था मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में। 3 दिन के बाद उनका फाइनल राइट्स किया गया था और साथ ही इस केस पर जहां मुंबई पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज किया गया था। इंपॉर्टेंटली जो 6 पेज का जो नोट, सुसाइड नोट, जो कि बताया जा रहा है कि जिया खान ने लिखा था, जिसमें साफ तौर पर सूरज पंचोली का नाम भी मेंशन किया गया था और उसी 6 पेज नोट के आधार पर सूरज पंचोली को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन बाद में जैसे ही जुडिशियल कस्टडी जाने के बाद फिर कोर्ट की ओर से उनको बेल मिल गई थी सूरज पंचोली को। फिर उसके बाद लगातार जो है वो केस की सुनवाई और इन्वेस्टिगेशन जो है पहले महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी, लेकिन जिया खान की मदर राबिया खान ने उन्होंने एक एप्लीकेशन बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की और उन्होंने कहा कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है और इसी को लेते हुए सूरज पंचोली को मर्डर चार्जेस उनके ऊपर लगने चाहिए। साथ ही ये पूरा इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ये मांग राबिया खान की ओर से की गई थी। जिसके बाद 2014 में, यानी जुलाई 2014 में, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि ये पूरा मामला जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के इंटेंस इन्वेस्टिगेशन, 3 साल की इंटेंस इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ने भी यही रिकन्फर्म किया कि ये सुसाइड है, क्योंकि जिस तरीके से एविडेंस सामने आ रहे थे, खासतौर पर उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, वेंसेरा रिपोर्ट हो, इन सभी को देखते हुए सीबीआई ने भी जो है वो सुसाइड केस रजिस्टर किया था। लेकिन 306 एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो चार्जेस है वो सूरज पंचोली के ऊपर लगाए गए थे मुंबई कोर्ट में। अब रही बात ट्रायल की, क्योंकि ट्रायल जो है वो पहले मुंबई कोर्ट में हो रहा था, लेकिन जब जजमेंट की बात आई तो उस समय मुंबई कोर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला जहां पर अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसको देखते हुए इसका दायरा जो है वो स्पेशल सीबीआई कोर्ट का ही होना चाहिए। जिसके बाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट जो है लगातार इस मामले की जो है ट्रायल शुरू कर दी गई थी। वहाँ पर लगभग 22 विटनेस जो है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, सारे एविडेंस सामने रखे गए थे। लेकिन लास्ट वीक में जहाँ पर दोनों प्रोसिक्यूशन की ओर से, यानी जिन्होंने राबिया खान के वकीलों की ओर से और साथ ही सूरज पंचोली की वकील की ओर से जितने भी सबमिशंस दिए गए थे, वो सबमिशंस कंक्लूड होने के बाद कोर्ट ने आज की तारीख रखी गई थी वर्डिक्ट को प्रोनाउंस करने के लिए। वहीं पर एक सबमिशन और एक राबिया खान के ओर से कल दिया गया था, जिसमें कई ऐसे एविडेंस और खास तौर पर ये कोर्ट से जस्टिस को लेकर बात की। ये कहा कि जो एविडेंस सामने आए और खासतौर पर दोनों एजेंसी, फिर चाहे वो महाराष्ट्र पुलिस हो या फिर सीबीआई हो, उस एविडेंस को नहीं देख रहे, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि जिया खान का सुसाइड नहीं लेकिन वो मर्डर है और ख़ास तौर पर सूरज पंचोली इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। उन्हीं को जो है इस पर रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, कोर्ट को उनको कन्विक्ट करना चाहिए। इस तरीके की गुहार जो है वो राबिया खान की ओर से लगाई गई थी। लेकिन आज जहाँ पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा
कि आज वर्डिक्ट का दिन है, तो इसको लेते हुए कोई भी रिटन सबमिशन जो है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, कोई भी रिटन सबमिशन एप्लीकेशन को नहीं सुनेगी कोर्ट, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ वर्डिक्ट का दिन है, जिसको देखते हुए कोर्ट ने जो है सीधा साफ तौर पर कहा कि 12:30 बजे जो है वो वर्डिक्ट देगी। और जैसे ही कोर्ट प्रिसाइड हुई, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि कोर्ट ने पहले सूरज पंचोली जी के इस पूरे मामले में आरोपी है, उनको पहले विटनेस बॉक्स में बुलाया, उनका नाम पूछा गया, और जैसे नाम पूछा गया उसके बाद खुद कोर्ट ने ये कहा कि लैक ऑफ एविडेंस के तहत सूरज पंचोली को इस मामले से बरी किया जाता है। All right, Alisha, stay with us. Let's take a word from our senior editor Shravan, also joining us from the newsroom. Shravan, once again for our viewers, if you can take us through the timeline of this case, because the mother of Jiah Khan has maintained right from the beginning that her daughter was in a physical abusive relationship, and that it was not a suicide, rather a murder of her daughter. Well, in fact, it's been a very long battle for Jiah Khan's mother, Rabia Khan. For almost a decade, she's been fighting this out. Remember, when this case actually was being investigated by the Mumbai police, she had essentially raised questions about the evidence that was actually gathered. In fact, Suraj Pancholi was arrested just about a week after the FIR was actually registered, but a few days later, he was granted bail by a court in Mumbai. He was only asked to surrender his passport. Remember, it was only after Rabia Khan had essentially petitioned before the court in Mumbai, essentially saying that multiple facts of this particular case was not taken into account, and she was essentially demanding that the CBI basically steps in. Even after the CBI actually stepped in, and the charge sheet that was actually filed by the Central Bureau of Investigation, in which Suraj Pancholi was actually named as an accused, he was basically charged for abetment to suicide. That essentially did not satisfy Rabia Khan, and that's the reason why, remember, she had also brought in private investigators in this entire matter. Forensic experts were basically hired by her, and she essentially said that as per these private forensic experts, there seems to be a lot of miss in the investigation that was first carried out by the Mumbai police and thereafter by the Central Bureau of Investigation. But what comes across as a big setback even for the central agency at this point in time is that when the court essentially says that the acquittal has essentially happened on the lack of evidence, then perhaps it certainly comes across as a setback for the central agency. What is it that they have essentially missed out? It would be important to have a fine reading of the order just to understand perhaps that whether at all there are any shortcomings in the investigation that has been carried out. In all likelihood, there would be an indication of the same in the detailed order that is expected to come in later in the day. Once that comes in, a better picture basically emerges. Knowing Rabia Khan for some time now, it's unlikely that she's going to give up this entire fight. For over a decade, we have essentially seen that she's basically traveled between two countries, and she believes that this is a case of murder, primarily on the count of two. One, the fact that her daughter had also confided in. Secondly, if you take a look at the 6-page suicide note that was recovered by the Mumbai police, in which there is a categorical mention of the fact that the accused in question, that is Suraj Pancholi, was torturing her. She makes a mention of the fact that she was repeatedly abused by Suraj Pancholi, and the fact that she was in a relationship for quite some time. Having said that, in a case of abetment to suicide, there are several other aspects that have to be taken into consideration, and that perhaps may have been missed out by the Central Bureau of Investigation. So at this point in time, unless the detailed order essentially comes in from the special CBI court, it perhaps would be a little too premature to say that where exactly lies the lacuna in this particular case, because the acquittal is not about in this particular matter is not about the involvement of the accused. This is with regards to the fact that the central agency was unable to gather enough evidence, because remember, when the first arrest was essentially made, that was primarily based on that 6-page suicide note. Having said that, Rabia Khan has gone a step further. She says that this is a case of murder, but the Central Bureau of Investigation, even in the charge sheet that was actually filed, they made a categorical mention that there is absolutely no foul play.
Let me also quickly go across to Advocate Swapnil Kothari, who's joining us on this broadcast. Swapnil, just to put this into perspective, as we understand, the acquittal essentially happening because of lack of evidence. Does that really actually mean that, there is absolutely no role that the accused has essentially played? More details perhaps would only come in that particular, in the detailed order. Yes, Shaban. What the acquittal means is often more than not that the prosecution has failed to prove its case beyond reasonable doubt. And that is the reason, if there is a reasonable doubt that was created by the defense in the minds of the judge, then acquittal follows. Because we follow a system of criminal jurisprudence where everybody is innocent unless proven guilty. And if you are not able to prove that, especially in a case of abetment to suicide, which you have to prove, the onus lies on you as the prosecution. So if the evidence is lacking, or if you have not been able to find sufficient evidence to pinpoint towards the accused that he was the person who was responsible for driving the victim to suicide, because this was an abetment to suicide case, then in that event, the accused will be let off. Now, whether it was a murder, for that you will need to present more evidence. And I'm sure Rabia Khan has got something which, on the basis of which she's saying certain things. So I don't believe that the doors are shut for her here. She can still appeal to a higher court. She'll have to go with a higher amount of evidence to show, even if she wants to pursue a 306, she can go to a higher court, because people do go to high courts and still to the Supreme Court if they lose at the lower tiers. So an acquittal for Mr. Pancholi today is a relief for him, simply because the court has come to a conclusion that the evidence is not satisfactory. Now, it's for Rabia Khan to show that the evidence was satisfactory. Alternatively, in a criminal investigation, if there is some evidence which comes to light further, then you can go to a court of law and the court of law can reopen the case. Alternatively, it can say, yes, we don't mind taking this evidence into account, because obviously justice should not be throttled simply because this evidence has come out at a later stage. So, Shaban, this is more of a cat and mouse game, especially when you go to the tiers of the court. But it is for the prosecution now to pull up its socks and to show that, look, okay, we didn't do a great job here below, but let's try to do a good job at a higher court if they wish to pursue that. And if they don't want to, and if they are convinced that this is all the best that they can do, and if still Rabia Khan wants to pursue this case further, then, the prosecution has laid out the roadmap for her. And then if she wants to step on that road, she can go ahead. And if she doesn't want to step on that road and, shut this forever, that's up to her. But knowing Rabia Khan, as you rightly pointed out, I don't think she's going to rest. She'll possibly pursue, and generally even smaller litigants also, or common litigants also don't stop, especially when they believe in a particular case. They still tell us lawyers that no, we want to pursue it at a higher court. It doesn't matter, we've lost it here. But let's there's hope springs eternal in the human breast, as said Alexander Pope. So I believe Rabia Khan must be hopeful of going to a high court and trying to pursue that. That is something which we'll see as the day unfolds, because when the order comes in her hands, she consults her lawyers. The lawyers will be able to tell her more appropriately as to what sort of next step should she be taking. Well, in fact, just for all our viewers who are tuning in right now, quick recap of what we know so far. The verdict has finally been delivered. Suraj Pancholi has now been acquitted in the Jiah Khan death case. In fact, what we are picking up right now is that in a short while from now, Rabia Khan is likely to speak to the media outside the special CBI court in Mumbai. Now, undoubtedly, it comes across as a big setback for someone who's been fighting this case for almost a decade. But having said that, the focus essentially would be on what sort of evidence are we really looking at. If we simply go by the fact that the first agency that was basically looking into the probe agency, that's the Mumbai police, and the FIR that was basically registered, at that first it was the accidental death report, and thereafter more details coming in with regards to abetment to suicide, based on which Suraj Pancholi was arrested a week after the first information report was actually filed by the Mumbai police. But Swapnil, with regards to in a case of abetment to suicide, we've essentially seen that it's always been very extremely challenging for the investigative agencies to come up with some sort of evidence. Would you say that a 6-page letter which
of course, comes across as a clear indictment. Does that really suffice as an abetment to suicide? Or would you say that there is a larger aspect that basically the investigative agencies essentially have to gather or look into before they actually file their charge sheet? Shravan, you're absolutely right. The investigating agency needs to look at it a little bit more holistically, universally, before you come to a conclusion whether it's in any cases of accidental death. And to slap it off as abetment to suicide, just as it was in Sushant's case, is a little bit too early and premature, in my opinion. Now, if the investigation was fraught from the very inception, that it came to a conclusion that it was 306, and if there was evidence to the contrary, then that evidence should have been considered. And eventually, I believe that the best way out usually for the investigating agencies is to, if there is some sort of a doubt or if there is some sort of a nebulous area, then I think what you need to do as an investigating agency is to come out with a case of Section 302. Then leave it to the court to say that, sorry, investigating agency, this is not 302, but according to us, it's a 306. And as far as 306 is concerned, we don't want a situation where 306 is something which can be proven or something of that sort, because it's a very hard thing to prove as 306. So the courts know that, the investigating agencies also know that. Now that let the court decide that. So in cases of accidental death, such as this, where there is a nebulous area and where there is, 60-40 evidence or even a 50-50 evidence, then that should be the way that the investigating agency should take a course that way, so that even the victim side is not, sort of unhappy about it. But nevertheless, if that's the course that they've taken, I don't know exactly what sort of evidence they have in their hand, and if Section 306 was the appropriate case for the investigating agency to slap on. But as you rightly pointed out, a charge sheet needs to be filed after a due deliberation. Now, whether it's due deliberation or not, it is for the court to look at, especially when the victim's family is shouting hard for 302. So that is then for the courts to come to a conclusion that, yes, investigating agency, you ignored this evidence. It should have been 302. It should not be 306. And nothing stops by the court. By the way, nothing stops a court from coming to that conclusion and telling the investigating agency that please change it. Please beef up your charge sheet, because there are several sections that are added up later after some discussions and tribulations in the court. So it's not that once you slap a particular section, some section cannot be added or a section cannot be changed. But the point is that for that, it requires a tremendous amount of arduous effort on the part of the evidence, where they have to then believe the victim's family more often than not. And if there is some sort of a skirmish between them itself, between the prosecution and the victim's family, then there's very less chances that the victim's family has got, because if the prosecution has come to a conclusion, come to a certain stage of mind, and for whatever reasons it may be. आप इनसे बात करें। आप अपना पहला रिएक्शन दीजिए। माँ का रिएक्शन बहुत जरूरी होता है। 10 साल आपने ये लड़ाई लड़ी। देखिए, मैं एक बात कहूँगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माई चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है, कहाँ पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर, एंड नाउ द abatement to suicide is gone, but the murder still is hanging. चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट जाएंगे मैम आप? Well, yes, why not? क्या लग रहा है कि क्या तब सर बताइए कि क्या हुआ, आज ऑर्डर आया था, हालांकि पक्ष में आपके फैसले क्या फैसले बताइए। जब तक अरे इधर आइए जी सर, जब तक सर आज फैसला था, क्या कुछ आज स्पेशल कोर्ट सीबीआई ने जो वर्डिक्ट पास किया है, my client has one simple line: there is a delivery of judgment, but the justice is still awaited. We are waiting for the final justice, and according to her, this verdict is because of the lack of evidence which was supposed to be collected by CBI. CBI ने उनका काम ठीक से किया होता तो ये verdict शायद दूसरा होता. Cause of death was main point. Cause of death पे मेरे क्लाइंट ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सीबीआई को दिए थे. उस रिप्रेजेंटेशंस में उन्होंने ये भी बोला था कि कॉज ऑफ डेथ इज नॉट जस्ट द सुसाइड. जो सीबीआई के पास केस ट्रांसफर हुई थी, दैट ट्रांसफर वाज आल्सो विद अ पर्टिकुलर रीजन कि ये कॉज ऑफ डेथ सुसाइड का नहीं है, देयर इज समथिंग मोर देन सुसाइड. इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट continued by CBI.
इंडिपेंडेंटली, बट जो जू पुलिस स्टेशन ने मोटिव रखा, आई मीन कॉज ऑफ डेथ रखा था अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का, उसी मुद्दे को आगे लेके गए। उन्होंने ये चीज और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना एक्सपेक्टेड था। जो विटनेसेस जू पुलिस स्टेशन ने रखे थे उन्हीं विटनेस के वापस स्टेटमेंट ले गए, जैसे आदित्य पंचोली को। एक ही अच्छी बात हुई कि सीबीआई ने एटलीस्ट डिपोजिशन में आदित्य पंचोली का नाम ड्रॉप किया, नहीं तो बेटे के केस के चार्ज में फादर को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड किया नहीं क्या प्रूव करवाना, तो सीबीआई के लिए भी बहुत एम्बेरस होता था। तो लेट अस सी, अभी वर्डिक्ट हाथ में आएगा। हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे वर्डिक्ट? हाँ, मेरे क्लाइंट ने अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आफ्टर रीडिंग जजमेंट और उसका क्या एनालिसिस है उसके ऊपर फिर आगे हाईकोर्ट की कार्रवाई शुरू करेंगे। काय सांगाल 10 वर्षांनी या केसचा क्या कहना चाहेंगे? भाई मैंने आपको बता दिया है, अबेटमेंट की सुसाइड अब एक्विट हो गया है, लेकिन अब सवाल रह गया है मर्डर का, राइट। और मैं तो शुरू से कह रही थी सीबीआई को कि मेरी बच्ची को मारा गया है। ये केस 302 का है। अब सीबीआई के पास इवन अबेटमेंट के कोई एविडेंसेस नहीं थे, तो कोर्ट क्या करती है, रिस्पेक्ट कोर्ट्स डिसीजन, बिकॉज उन्होंने वो ही किया जो प्रोसिक्यूशन ने उनको दिया नहीं। अगर वो एविडेंस उसके देते तो वो चार्ज लगते। अब उनको अब पेश करना होगा। In fact, that is Jiah Khan's mother, Rabia Khan, once again insisting that right from day one she's essentially been harping on the fact that this is not a case of death by suicide, but rather this was a case of murder, and that's the reason why she was essentially demanding Section 302 to be invoked by the Central Bureau of Investigation. But on the other hand, the central agency has been quite cautious on this entire aspect, saying that there was nothing during their investigation which essentially suggested that there could be foul play and the necessity of bringing in 302. Having said that, as far as what next, on that, let me also quickly bring in Swapnil Kothari, and we'll also be getting another eminent lawyer joining us on this broadcast to dissect the verdict. In fact, we haven't got our hands on the detailed order copy as yet. Perhaps in पिछले 10 सालों में सूरज पंचोली के खिलाफ नहीं किया। इस मैटर में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, मुंबई पुलिस ने, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है। ये दोनों हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। इतना इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद आज तक देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट सूरज पंचोली, एक भी केस नहीं हुआ। इस पूरे केस में प्रोसिक्यूशन ने 22 विटनेसेस एग्जामिन की। Yes, I can hear you. इन दैट 22 विटनेसेस कंप्लेनेंट भी थे, उनकी दूसरी बेटी भी थे, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुंबई पुलिस के, सारे विटनेसेस ने आके अपना अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा। उसके बाद डिफेंस ने, यानी कि मैंने, उनका सबका क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। अब जो भी एविडेंस आया वो रिकॉर्ड पे है। कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने एलिगेशंस करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन जब एविडेंस रिकॉर्ड पे आता है उसके बियॉन्ड कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई। लॉ इज अबव एवरीबडी। ऑनरेबल कोर्ट ने सारा एविडेंस एग्जामाइन करने के बाद आज सूरज पंचोली को एक्विटल दिया है। अभी तक जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी हमारे हाथ में आई नहीं है, बट ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशंस पास किए होंगे वो जब जजमेंट आएगा तो मैं आपसे बात करता हूँ। सर, आपके आर्गुमेंट्स के मेन पॉइंट्स क्या थे, क्योंकि उस पर रिलाय तो डेफिनेटली कोर्ट ने किया होगा अगर एक्विटल है आपके फेवर में है तो। किन किन आर्गुमेंट्स पे आपको लगता है कोर्ट ने गौर किया होगा, या कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो आपके फेवर में जाते थे और आपने कोर्ट के ध्यान में लेके आए हो? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस केस में ऐसी थी, इस जजमेंट में, इस आर्ग्यूमेंट में, मेंटल हेल्थ हमारे देश में एक बहुत सीरियस कंसर्न है। हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट इंट्रोड्यूस किया है। ये एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया है? यंगस्टर्स आर फेसिंग डिप्रेशन, यंगस्टर्स आर फेसिंग एंजाइटी। दिस इज अ वेरी सीरियस इलनेस। वन ऑफ द क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट वाज any person who unfortunately commits suicide, a single incident cannot be a triggering point. You have to understand and investigate the economic, social, cultural background of the person since childhood. इस केस में बचपन से लेके जब इंसिडेंट हुआ तब जो डिसीज्ड की जर्नी थी ये हमने कोर्ट के सामने रखी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। कुछ बहुत सीरियस इंसिडेंसेस रिकॉर्ड पे आए हुए जो मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि जजमेंट की कॉपी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ जेन्युइन चाइल्डहुड ट्रॉमा डिसीज्ड को था या नहीं था, ये आर्ग्यूमेंट हमने कोर्ट के सामने रखा।
3-4 ऐसे मेजर इंसिडेंसेस है कि जो एक बहुत जेन्युइन कॉज ऑफ कंसर्न थे डिसीज्ड के लाइफ में, और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उस इंसिडेंसेस के मद्देनज़र उनके ऊपर ये बात आई कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू कमिट सुसाइड। सर, जो इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, क्या उसने कभी कोई सुसाइड अटेम्प्ट की बात भी आपने कोर्ट के सामने लाई थी? आपकी जानकारी में कुछ ऐसा था? देखिए, ये सब रिकॉर्ड की बात है, एविडेंस की बात है कि उन्होंने इससे पहले डिसीज ने अगर कोई सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, ये सीबीआई ने भी प्रूव किया उनके इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस ने भी प्रूव किया है। ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी कि अगर डिसीज्ड को सुसाइडल टेंडेंसीज थे तो इस केस में आरोपी सूरज पंचोली को फॉल्सली इम्प्लीकेट क्यों किया गया? व्हाट इज द रीजन? एंड समवेयर वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि पिछले 10 साल में ऐसा एक भी एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आया जो डायरेक्टली सूरज पंचोली को इसमें इम्प्लीकेट करे। बट सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह थी कि इन्वेस्टिगेशन ने सूरज पंचोली के अलावा क्या इस केस में कोई और इन्वॉल्व हो सकता है, इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। इट वॉज अ मैलिफाइड, वन टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन, वन साइडेड। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हो, अगर इसका इन्वेस्टिगेशन करके रूल आउट होता तो और बात थी, लेकिन रूल आउट भी नहीं किया गया। तो ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे जो सीबीआई ने एग्जामिन किए थे, पुलिस ने भी रिकॉर्ड किया था स्टेटमेंट, लेकिन प्रोसिक्यूशन के दौरान उनको सीबीआई ने नहीं एग्जामिन किया। सर, सुसाइड नोट को लेकर के हैंडराइटिंग को लेकर के आपकी तरफ से कोई बात रखी गई है? क्योंकि उसके साथ और एक नोटबुक मिला गया था जिसमें एफएसएल की रिपोर्ट में साफ हुई थी कि हैंडराइटिंग एक ही शख्स का है। देखिए, ये सब रिकॉर्ड की बातें, एविडेंस की बातें, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सब जो कोर्ट के सामने एविडेंस पे है वही बात आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ नोटबुक्स जब्त की गई थी जिस दिन अनफॉर्चुनेटली सुसाइड हुआ 3 जून 2013 को। पुलिस को कुछ नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, देयर वाज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। 7 जून को किसी विटनेस को, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, किसी विटनेस को एक नोट मिली जिस नोट में ना किसी का नाम लिखा है, ना कोई डेट है, ना वो नोट किसी के लिए एड्रेस थी। पुलिस ने, जुहू पुलिस स्टेशन ने एविडेंस में ये रिकॉर्ड पे बोला है कि वो नोट जब हमने मांगी तो हमको नहीं दी गई लेकिन मीडिया को दी गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पहले सर्कुलेट हुई। ये रिकॉर्ड पे है, एविडेंस पे। अब उस नोट में जो हैंडराइटिंग है, सीबीआई ने क्या किया कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से ओपिनियन मांगा। ओपिनियन मांगते समय वो नोट जिस डायरी से मिली है, वो डायरी और एक नोटबुक, ये दोनों चीज़ें फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने बोला है जिस इंसान ने ये डायरी लिखी है, जिसने भी ये नोटबुक लिखी है, उसी ने ये खत लिखा है और ये रिकॉर्ड पे आ चुका है। वो अभी जजमेंट आया नहीं इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि किसने ये नोट लिखी थी। जिया ने तो बिल्कुल नहीं लिखी थी। परंतु सर, सीबीआयने तपास प्रोसेस केला आणि असं या संदर्भात शेखर गुप्ता यांचं म्हणणं आहे. शेखर गुप्ता यांचं अजूनही म्हणणं आहे, म्हणजे ते उच्च न्यायालयात जाणार आहे की सीबीआयने व्यवस्थित तपास केल्याने म्हणून बाईक जग बरी झाला, अन्यथा जर तपास व्यवस्थित झाला असता तर तो ॲक्यूट नसता झाला, असं त्यांचा दावा आहे. हे बघा, अपील फाईल करणं प्रत्येकाचा अधिकार आहे, मला त्याच्याबद्दल काय बोलायचं नाही. सीबीआयच्या इन्व्हेस्टिगेशनबद्दल तो योग्य झाला होता का नव्हता असं कोर्टाने कुठलंही भाष्य केलेलं नाही. अजून जजमेंटची कॉपी माझ्या हातात तर आलेली नाही आहे, तर मग आपण जजमेंटबद्दल काही बोलणं चुकीचं ठरेल. पण सर्वात महत्त्वाचं काय, व्हॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, द सीबीआयज इन्व्हेस्टिगेशन वॉज चॅलेंज्ड बाय द कंप्लेनंट इन 2016 बिफोर द बॉम्बे हायकोर्ट. Bombay High Court, in a very detailed judgment, has ruled out all the allegations against CBI. That matter went to the Supreme Court. Even the Supreme Court has dismissed that petition. Uske baad, if we can again discuss about the same aspect, I don't think so, because that will be the contempt of Bombay High Court order. If you remember, on the last occasion, अभी हाल फिलहाल में 6 महीने पहले, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिटिशनर को, मतलब राबिया को, कॉस्ट लगाने की बात की थी. वो कॉस्ट लगी नहीं कि बार बार आप वही पिटिशंस लेके कोर्ट के सामने आ रहे हो, जबकि इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, कोर्ट्स ने उनका जजमेंट दे चुके हैं. These judgments are binding upon us. Now it is high time we respect the judgments of the honorable court and stop entering into allegations before the media. जो भी है कोर्ट के सामने ले आइए, किसने मना किया था. थैंक यू सर. सर अपील केलं पण नाही. सर सॉरी सर आपसे जाना चाहिए.
Ma'am, even many of the evidence that you have been given to the agencies as well, but after which, what are the evidence that has been provided by you itself to take the case? Everything, the lacuna in Juhu police, right? The lacuna that CBI has not done, the four forensic experts report, everything, whatever possible, which points to murder. The photographs of her injuries. So you say that now again the murder case is something you're going to... Well, that was Rabia Khan speaking to my colleague Alisha soon after the verdict was delivered. A big relief for Suraj Pancholi. He's now been acquitted by the special CBI court. Remember, the charge that he essentially faced was that of abetment to suicide. Jiah Khan's mother essentially saying that abetment to suicide is something that she wasn't even basically arguing for. She was basically harping on the fact that this is a clear case of murder, and she's basically been highlighting the fact that there have been lacuna in the investigation that has been carried out by the Mumbai police, the first probe agency in this matter, following which we've seen Suraj Pancholi being taken into custody by the Mumbai police. Swapnil, you've heard what Rabia Khan had to say a short while back. She's essentially harping on the fact that this is a case of murder, but this entire allegation of murder that has been leveled against Suraj Pancholi by Jiah Khan's mother was already rejected by not just one but two agencies. One, of course, the Mumbai police, and thereafter we had the Central Bureau of Investigation saying that there was no foul play that was found in the investigation that was carried out by them. Well, Shravan, it often happens that investigating agencies commit a mistake, and it's for the prosecution then to show that there was a mistake. And if you've gone to the courts of law saying that this is something which the investigating agencies ought to have looked at, and the courts have also not agreed with you, then I would either say that it's bad luck on your part, or maybe you've not been able to convince the courts on that front. So I reiterate that it is for now for Rabia Khan's lawyer, or even herself possibly, to stand before the court and to say, to pinpoint the way the things that she needs to pinpoint, or through a lawyer, through her own lawyer that she has. Because if she firmly believes that yes, it is a case of murder, and this evidence, this ought to have been looked at, and this is where the courts have even failed to look at it, and this is where the investigating agencies have naturally failed, then it's again for the courts to then reconsider her stance in that sense. Otherwise, I don't see this making a headway, even when you go to the High Court, because then the High Court will also look at the evidence that is there before the CBI court. Now, how it interprets it, that is then, I would say it's a toss of a coin there. But I think the more emphasis that Jiah Khan's mother needs to pay on is the fact that, yes, it was a murder. So to proceed merely on the case of appeal and to pursue 306 itself would be a flawed strategy, in my opinion. So if you're going to pursue that strategy, because 306, even if you have evidence, is very difficult, because the parameters of 306 are very limited. So it's rather that you pursue 302, you try to convince, if that's what you believe in, because the way you are talking to the media also about it, as Rabia Khan is talking, it's very clear that she's very, very convinced in her own mind that her daughter could not have committed suicide, even if she had bouts of depression. But the point is that that's not for you or me to believe, or how much we believe her or how much we don't believe her. Ultimately, justice depends upon whether the courts believe you. And you need to present it to the best of your ability. Go for some of the best lawyers that there are in this country who practice in the criminal sphere, and then use them or use their services. Then I think you'll be better off in that sense, because we have got too many senior advocates who deal with this specialized area, and there are quite a few who come on your TV as well, and come on other television as well, and those are I can take their names also. Mr. K.K. Manan also is one of them, and Mr. Mahesh Jetmalani is also one of them. So those are the ones that I think you need to look at when you if you really want to pursue this in a better manner or a more effective manner. But if you're satisfied with your lawyer, and if you're satisfied the way he's conducted it,
And if you believe that that's something, then that's your call, and we can only wish you all the best. But you will need to emphasize the aspect of 302 and try to convince the court about that. If you can't do it, then pursuit of 306 is, in my opinion, a flawed strategy. It is not going to work. And even if you don't agree, but you will have to be satisfied with the fact that yes, Mr. Pancholi needs to walk free if the evidence does not point conclusively in his favor, rather against him or in your favor, as Suraj Pancholi's lawyer pointed out. And whatever Mr. Pancholi's lawyer was saying was absolutely, legal, stages and legal aspects that every court looks at and the way the courts need to look at it. So maybe you've not been able to give it in a way that that the court needs to look at it, simply because the evidence itself was lacking. Now, why that evidence was lacking is for you to then convince the court that why the evidence was lacking. Or even if the evidence was there, it was not presented properly. Because there are two things that happen when you lose out. One is that you don't have enough material. Two, you have enough material, but you've not been able to show that to the court. It's like being a fantastic, absorbent of knowledge. You have got great knowledge, but you're not able to ram it across to the person. That makes you a bad teacher, because you're not able to say that to the students. So I'm not saying that you are as a lawyer or you as a client are teaching something to the court. What I'm trying to say is just giving you an analogy of stuff, that people are extremely knowledgeable, but they don't make great teachers. And whereas people with less knowledge make great teachers because they're able to put it across. So it's either of the two. And that's where you need to focus on. 306 is a flawed exercise, in my opinion. Legal perspective that is Swapnil Kothari was putting in front of us, Shravan. Coming to you, you've also very closely tracked the CBI investigation in the case so far. If you can just give an overview of the investigation that has been done by the investigative agency, which has led to the court to give this judgment today. Well, in fact, Sarika, I've even covered when the Mumbai police was actually investigating this entire matter. Remember, first with the accidental death report coming in, and thereafter the FIR that was basically registered. The FIR was basically hinging on the 6-page suicide note, in which, if you take a closer look at it, there is a clear mention of the fact that she was repeatedly abused, she was repeatedly tortured, she was actually forced to abort. These are the reasons why the Mumbai police had actually arrested Suraj Pancholi. But the fact of the matter is that, as far as the abetment to suicide case is concerned, remember, there is much more evidence that is required, not just only relying on that particular suicide note, which of course had to be backed by the forensic report that came in much later. That's exactly why the Central Bureau of Investigation, when they were basically carrying out their investigation, they were basically looking at external forensic reports to be brought in. The circumstances that led to the death by suicide, these were certain aspects that the Central Bureau of Investigation was looking at. The role of Suraj Pancholi becomes extremely important, leading to the death of Jiah Khan, and that's the reason why they were looking at whether at all there have been any sort of altercations that took place just days before she was found hanging in her Juhu apartment. These are certain aspects that they were looking at. Now, what exactly has the court really found, or in terms of what hasn't really satisfied the court, that would only come up in that detailed order, because this undoubtedly comes across as a setback even for the central agency, because they haven't really been able to prove before the court that this was a case of abetment to suicide, something that Rabia Khan does not agree. But if you first look at the first step, that is to at least look at who exactly is behind the death by suicide case of Jiah Khan, and whether at all there is a case of abetment or not, that is an aspect that was looked at by the Central Bureau of Investigation, detailed out at the charge sheet that was actually found, filed by the central agency. And they also made a point that there was no foul play, because if you realize, they've gone through the electronic evidence in this entire matter. CCTV footages were actually examined, and when the death actually took place,
there was no presence of anyone. Having said that, yes, they said that she was repeatedly tortured, and they've actually been able to substantiate that by several ligature marks that were actually found, injury marks that were actually found. But Rabia Khan still says that this is not a case of death by suicide, but in fact this is a case of murder, and that is the reason why Section 302 should be invoked. But this is an uphill task for Rabia Khan, who's been fighting this case for almost a decade now. Yes, absolutely. And the wait for justice continues. Thank you very much, Swapnil Kothari, for joining us on this live coverage. Thank you, Alicia, and thank you, Shravan. We will keep a close track on the developments in the court as well as we await the detailed court order. For now, we're moving on to more breaking news coming in this time from the Supreme Court of India. In the Atiq Ahmed murder case, what we're getting to know is that the Supreme Court has sought a status report from the UP government over the killing of Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed that took place a couple of weeks back. A report has been sought in the next 3 weeks is what we're getting to know. We will have our reporter Sambhav joining us on the phone line to give us more details about Supreme Court's findings and Supreme Court's statement as far as Atiq Ahmed murder case is concerned. What we can tell our viewers is that the Supreme Court has directed the Uttar Pradesh government to submit a status report on steps taken after the killing of gangster politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf in Prayagraj. Now, the bench of Justices S. Ravindra Bhatt and Dipankar Datta also sought a report from the UP government on the police encounter of Ahmed's son Asad in Jhansi. Now, Asad was killed in an encounter by a special task force team of the UP police on April 13th, and on April 15th was when Ahmed and Ashraf were shot dead at point blank range by 3 men posing as media persons when they were being taken for a medical checkup in the medical college in Prayagraj. Atiq and Ashraf's murder had taken place when they were very closely guarded by the police of UP as well. The top court was hearing a plea was filed by Advocate Vishal Tiwari, who has sought an inquiry into the 183 encounters that have taken place in Uttar Pradesh since 2017. So Swapnil Kothari continues to join us to give us a legal perspective on what could be the next steps as far as the UP government is concerned, and also for the Supreme Court. Now that the Supreme Court has sought a report from the UP government on the encounters that have taken place in the last few weeks in Uttar Pradesh. Swapnil Kothari, over to you. Well, I think first you can go ahead with the UP government's report if that's what you want to. But the police were, obviously the UP police, and I believe that an independent inquiry would be more appropriate. I don't think that the UP government is. It has to be any inquiry in such sort of a thing, where somebody is shot dead point blank, in the presence of the police, can be done by the UP government itself, because they'll be biased in this. They'll try to protect their own people and say that, no, this is what was there and that was there, and, the police did the best what they could, but nevertheless the killers outsmarted us. So I believe this kind of a thing has to be looked at into by either a Supreme Court judge or a High Court judge, and independent SIT has to be formed. I don't think the government is the appropriate party to look into these kind of things. More so from the perception of bias, more than anything else. So I don't believe in this UP government's Supreme Court seeking this report from the UP government. But if the Supreme Court believes that the UP government is well equipped to do that, and if it eventually wants to deliberate over it after the report comes in its hands, then so be it. But that's not the view that I would take. Okay. It's very customary. We think it is, Mr. Swapnil Kothari, because it was a plea that was filed in the Supreme Court in connection with the encounters that have taken place in Uttar Pradesh, to which the Supreme Court has sought a response from the UP government on the recent encounters and the killings that have taken place in police custody. We have a response coming in from the petitioner. Let's listen. देखिए, एनकाउंटर्स केसेस में पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स पास किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और सब में यही कहा है कि इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में एक इंडिपेंडेंट प्रोब की ज़रूरत होती है, क्योंकि सच्चाई निकल के सामने आए कि वेदर दीज आर फेक एनकाउंटर्स और रियल एनकाउंटर्स, तभी कुछ सामने तथ्य निकल के सामने आएगा। तो जहाँ तक
इसका सवाल है वो स्टेट गवर्नमेंट एफिडेविट फाइल करेगी, उसमें वो क्या कहती है कि किस तरह के उसके कदम उठाएं, कितनी उसकी बातों में सच्चाई है, ये तभी पता चलेगा जब एफिडेविट रिकॉर्ड पे आएगा। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से जो एडवोकेट उन्होंने साफ तौर से कहा कि एक एसआईटी गठित हुई है जो इस पूरे मामले की इंक्वायरी ऑलरेडी कर रही है, तो फिर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की क्या जरूरत आन पड़ी है? उसकी रिपोर्ट भी है, वो भी जांच करिए पूरे मामले। देखिए, एक नॉर्मल कोर्स होता है, कुछ भी घटना होती है, एसआईटी फॉर्म होती है, पैनल फॉर्म होते हैं, लेकिन जो चीज़ उसमें कोई छुपी ना रह जाए या कोई चीज़ जब आरोप लग रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें कॉन्स्पायरेसी है, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है, प्लॉट है, तो वो चीज़ तभी सामने आएगी जब एक इंडिपेंडेंट प्रोब होगा। एक और बात, आपने जो पूरी पिटीशन दायर की उसमें एक और बात लिखी है कि जितने 183 इनकाउंटर्स हुए हैं योगी सरकार के आने के बाद उन सब की भी जांच होनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात में एनकाउंटर्स हुए, उन पे एक पैनल बिठाया गया, एचएस बेदी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की चेयरमैनशिप में। इस तरह से महाराष्ट्र में एनकाउंटर हुए, उन पर भी बिठाया गया था। और कई जगह जहां भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग सामने आती है और कोर्ट उसको सीरियसली लेती है बिकॉज इट इम्पैक्ट्स द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। और ज़्यादातर मामलों में यही सामने आया है कि एनकाउंटर्स फेक होते हैं, किसी ना किसी रंजिश की वजह से या इधर पॉलिटिकली मोटिवेटेड और बाय एनी सम अदर रीजंस दी एनकाउंटर्स आर टेकिंग प्लेस। और उसमें सिर्फ एक कॉमन वर्जन रहता है पुलिस का कि डिफेंस में हमने ये काम किया है, तो उसमें से सच्चाई निकाल के लाना एक बहुत ही मेहनत का काम है और एक पूरी तरह से इम्पार्शियल प्रोब हो तभी वह सच्चाई निकल के आती है सामने। And we're cutting across to breaking news coming in from Poonch. What we can tell our viewers is that Jammu and Kashmir DGP Dilbagh Singh was at the Poonch terror attack site. He inspected the site and also spoke to the media and informed the media that 221 suspects were picked, and in fact all the areas are being covered. Joint forces operations are underway. Terrorists are hiding in caves is what he has told the media. He also said that terrorists could be hiding there for a couple of months conducting recce. Their movement has been taking place since August 2022 as well. In fact, handlers who were involved in the Dhangri terror attack are the same is what J&K DGP has told the media. Some communication between the terrorists here and from across the border cannot be ruled out. There are different terrorist groups that are involved, Pakistani terrorist groups in fact, that are involved in the attacks that have taken place in the recent past in Jammu, especially in Poonch, where an army truck was set on fire. These are the pictures that we have of Jammu and Kashmir DGP at the attack site conducting the investigation, talking to senior police officials there. Now, Pakistan, what he also said is that Pakistani agencies are launching terrorists of Jaish and Lashkar. They're sending them to India to foist terror on the Indian soil because they do not want to see peace in the state of Jammu and Kashmir. Around 6 people have been arrested so far for harboring terrorists. These are the figures given to us by the Jammu and Kashmir police. In fact, he also said, the DGP also said that a recce was conducted by terrorists, an ambush was laid and the police convoy, the army convoy was fired upon and an IED was used to blow up the vehicle last week in Poonch. We're getting that sound reaction from the Jammu and Kashmir DGP. Let's listen in. Conducted by the terrorists and cowardly attack. 9 days have passed. Any breakthrough in this operation so far? See, regarding that attack on the army vehicle, very solid clues were received by police and the agencies working together. A lot of follow-up action has been taken on after that incident, and we have picked up around 221 suspects, out of whom some of them are seriously involved in providing logistic support and helping them in wrecking the area where that attack took place. That's a separate operation which is going on. But this area, you remember Dhangri incident and then Pargal army camp suicide attack. Pargal is just a few kilometers down when you came up. So after that, there's been off and on movement of terrorists seen in this area. So we have launched along with army, CRP, police together a very big operation in this area. All these ridge lines on your left and right and behind me are being covered one by one. We have already covered this ridge line. The front ridge line is being searched today. This ridge line is also under search. Army parties, police and CRP is now searching this area.
there were reports that they have been hiding in certain natural caves and natural hideouts which are available in the jungles. So we are covering this area, searching this area one by one. And this is to rule out the presence here and to see if there any presence is come to notice to take countermeasures against them. When you say that logistic support is being provided, had these terrorists been operating in this area for long? Sorry, repeat your question. When you say that logistic support was being provided by these villagers to these terrorists, how long these terrorists had been operating in this area? See, what we believe is the terrorists have been in this area for the past couple of months. They've been staying in this area. They're shifting hideout from one place to another. But they've been generally staying in this area. It was in the month of August when Pragal suicidal attack on the army camp took place. January 1, the Dangri incident took place. Ever since their movement has been noticed in one area or the other, latest movement came to our notice a couple of days back. And based on that report, this operation has been launched. They are still there, we believe, and we are sure that we'll be able to get them on. Same terrorists are involved in all the three incidents, Pargal, Dangri and this Totagandi? See, Pragal terrorists were neutralized in that incident. Only 2 of them were involved. They were neutralized. Dangri incident was a separate incident. One thing which is common is the handlers across from the Lashkar-e-Toba are common, and there are a couple of people who are sitting there and controlling these operations. After Dangri, they've done this incident. In most of these cases, organization involved is same. The handlers are by and large common, just a couple of them who are involved in this case. Incidents are separate, but there is some communication between the groups that cannot be ruled out. Handlers are common, and therefore maybe at some point of time they are from across controlling the movement and the operations that the terrorists have carried out so far in this area. So we cannot rule out that there's somebody who is a common link between the groups. But as of now, it appears that the groups are different. These are Pakistani terrorists? They are Pakistani terrorists. Earlier there was a report of a local terrorist also moving along with them. But they are Pakistani terrorists. To what extent the role of Pakistan is being seen in these attacks? See, when you see that their supply line is being maintained by a drone which is operating from Pakistan, their logistics are coming via drone from across, even the cash is coming from across. Narcotics are also accompanied along with those drone sorties to support the terror activities and to fund their stay in this area. So therefore, it's very clear that Pak hand and Pak agencies are involved in all this. You think Pak is somewhere rattled because of G20 meet being held in Kashmir Valley, because it's going to puncture their overall narrative, what they have been saying, there is no normalcy, there has been alienation after abrogation of Article 370? Yeah, could be that they are rattled. It's an activity, which is a normal activity. We have been having European delegations coming to Kashmir, to Jammu region earlier. They have come and seen that things are much better, things are very close to normalcy, and whatever remnant militancy terrorism is being seen, it's all being seen because of Pakistan agencies' active support in this region. They are launching Pakistani terrorists of Pakistan, origin of Lashkar-e-Toba and Jaish-e-Mohammed. They are the ones who've been involved. They launched them to Jammu region. Do remember that Fadain attack close to Honorable Prime Minister's visit. So this kind of activities are being carried out by the Pak agencies. So they seem to be, yes, they seem to be rattled. They don't want the people at large, the world at large to know that J&K is a different scenario altogether. People want peace, people are with peace, people want development, and they are very happy with the changes that have taken place. One last message to, what will be your message to Pakistan and their agencies who are trying to destabilize peace in this region? See, I would only say that it's a lot of bad things happening in their own area. They must take care of what is happening there. And if at all they have to see there's a lot of violence going on within their own territory, they must take care of that, of their own area. सर अभी तक इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां जो हैं वो 221 के करीब हम लोग सस्पेक्ट अभी तक उठा चुके हैं। उसमें गिरफ्तारियां अभी जो मोटे रूप में कोई आधा दर्जन के करीब की हैं। उसमें खास तौर पे वो लोग जो दहशतगर्दों को पनाह दे रहे थे, उनको साजो सामान दे रहे थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे थे,
उस तरह के लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, उनकी पूछताछ जारी है और भी क्लूज तफ्तीश के दौरान मिल रहे हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। सर मोडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरह से हमला हुआ, क्योंकि पहले क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्या स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक अगले पड़ाव पे पहुंच गई है, किस तरह का मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया गया है, स्नाइपर की बात आ रही है? देखिए, इस एरिया में जहाँ जो ऑपरेशन हुआ, पहले तो लोकेशन की जो रैकी करना और उसको अच्छे से समझने के बाद उस एरिया को चूज करना जहाँ पर गाड़ी की स्पीड लगभग 0 के करीब आ जाएगी, डाउन हिल है, बिल्कुल उसका एकदम शार्प टर्न है, यहाँ पर गाड़ी है और आपको आड़ लेने की जगह है, उसी आड़ के तहत टेररिस्ट रोड के करीब आकर के उन्होंने अम्बुश लगाया। अम्बुश लगाने के बाद फायरिंग हुई, जवान जो वहाँ पर चल रहे थे गाड़ी में उनका नुकसान हुआ, वो जख्मी हुए और उनको जख्मी हालत में जो थे उसी वक्त उन्होंने फिर गाड़ी को भी आईडी लगा करके गाड़ी को आग लगाई और गाड़ी को ब्लास्ट किया। इस तरह की जो पूरी की पूरी कार्रवाई है वो बड़ी अच्छी एक रैकी के बाद, एरिया की रैकी के बाद जगह की सिलेक्शन हुई है और लगता है कि उनका कोई नेटवर्क ऐसा होगा जिसके जरिए से गाड़ी के चलने की मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की उनको मालूम था और अपनी पोजीशन उन्होंने बारिश के बावजूद भी और उस दिन गड्ढे भी पड़ रहे थे उसके बावजूद भी वो पोजीशन ली और इस तरह का नुकसान वहां पर हुआ। सर ड्राई डे पर अटैक हुआ था, क्या लगता है कि कॉन्वॉय जो है वो अटैक कॉन्वॉय निशाने पे थी? देखिए, एडम की कार्रवाई ड्राई डे और नो ड्राई डे चलती रहती हैं, छोटी मोटी ऑपरेशनल एक्टिविटीज एरिया में जगह जगह पर हमारे कैंप हैं वो चलती रहती हैं। उसमें रैकी कार्रवाई के लिए थी या इसके लिए थी, इस तरह की बात अभी तफ्तीश में नहीं सामने आई है। इस तरह की सस्पेंड। कितने टेररिस्ट थे सर, कितने टेररिस्ट थे गाँव वालों के लिए? वो सामान इफ्तार का था या नहीं उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। कितने टेररिस्ट इन्वॉल्व थे अभी तक, क्या निकल कर? इस तरह का इंसिडेंट देखिए, टेररिस्ट की जो इन्वॉल्वमेंट है कम से कम हम लोग ये सोचते हैं कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, 3 से 5 लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें लगती है और अभी तफ्तीश चल रही है और मुझे लगता है कि ये चीजें आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएंगी। बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। पूरे पीर पंचाल रेंज के अंदर कितने टेररिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि 2001 के बाद इस तरह का इंसिडेंट हुआ, 2001 में ही राजौरी के अंदर 14 जवानों को शहीद किया गया था, बिल्कुल इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। उसके बाद दोबारा आज 2023 में इस तरह का इंसिडेंट हुआ। क्या मानते हैं कितना? देखिए, जहां पर एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन दहशतगर्दों की जो पाकिस्तान से इस तरफ आते हैं रहती है, काफ़ी महीने वो एरिया में रहते करते रैकी करते हैं और इस तरह की कार्रवाई करती हैं जिसमें काफ़ी लोग हम लोगों ने न्यूट्रलाइज भी किए। इस तरह के काफ़ी ग्रुप जो इन्फिल्ट्रेट करते हुए पाकिस्तान से इस तरफ आते हुए न्यूट्रलाइज हुए। इससे बहुत बड़ी तादाद तो नहीं है, मगर जब साइटिंग होती है एक जगह 2 की 3 की 2 की 3 की, इस तरीके से हम लोग ये सोचते हैं कि 2 से 3 ग्रुप जिनकी तादाद 2 से 3 4 हो सकती है वो अलग अलग जगहों पे एक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके से अगर टोटल मिला के देखेंगे तो मतलब 9 से लेकर के 10-12 तक की तादाद इनकी हम लोग अपने असेसमेंट के हिसाब से देखते हैं। So that was a response coming in from Jammu and Kashmir DGP, who is at the Poonch terror attack site conducting the investigation and saying that there's clearly a Pakistani hand in the attack. We're heading into a break right now. After the break, we'll get details of wrestlers who continue to protest. This is the 6th day of protest and they've now received support from Neeraj Chopra. In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Khargpur and Amity University. जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं, भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है।
नहीं हुआ है तो इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। 2014 से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी। कई जगहों पर तो एक दिन के काम के बदले 30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है, यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। इसमें किसका नुकसान हो रहा था? गरीब का, मजदूर का। हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया। अब करीब 90% से अधिक मनरेगा मजदूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। इससे जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा कम हुआ है। मनरेगा में फर्जीवाड़ा रुकने की वजह से 40,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर, उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी। जो पुरानी सोच और अप्रोच वाले लोग थे वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की जरूरत क्या है, दूसरे देश बना ही रहे हैं, वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सीन दे ही। A very good afternoon. It's 1:30. I'm Samiksha Srivastava. We are live and breaking, tracking all that's making headlines across the country. Starting first with the top headlines this afternoon. CBI acquits Suraj Pancholi in Jiah Khan death case. Rabia Khan to challenge the order. Controversy over poisonous snake remark gets bigger. BJP says abuse will backfire for the Congress. Wrestlers protest enters 6th day. Gold medalist Neeraj Chopra comes out in support, seeks early resolution. Maharashtra minister hints at big shake-up in Maharashtra politics, says more Uddhav MLAs are in touch with Chief Minister Shinde. Ex-JDU leader and Nitish aide Ajay Alok joins the BJP in presence of Union Minister Ashwini Vaishnav. Bengal BJP calls for 12-hour Bandh in Bengal in protest over law and order situation under Mamata government. Now, abuse politics has taken center stage in Karnataka, where elections are due on 10th of May. After Mallikarjun Kharge used the poisonous snake remark for Prime Minister Modi, another Congress chief has called Prime Minister Modi a poisonous snake, and now it's BJP MLA who's called Sonia Gandhi Wish Kanya. In fact, he's even said that alleged and called Sonia Gandhi an agent of Pakistan. So a lot of these abuse politics that have been happening in poll-bound Karnataka, the latest of course being a BJP Neda
who's called Sonia Gandhi a wish kanya. He's called Sonia Gandhi an agent of China and Pakistan. Listen in to that reaction that's come in from the BJP MLA in Karnataka. ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತಗೊಂಡದ. ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಜೆಂಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ. All right, let's take a word from Prajwal also. Prajwal, if you can give us more details on this of this BJP Neta who's called Sonia Gandhi a wish kanya. Where exactly did he say this and who all were in attendance? You know, this was made at a public rally at Hubli Dharwad region where Basangauda Patil Yatnal is campaigning for the BJP party, and there were also several other leaders, but mainly it all pertains to the local BJP unit as well. And this is something which was absolutely uncalled for, because Basangauda Patil Yatnal, in his bid to go ahead and hit out at Mallikarjun Kharge, has himself ended up on a controversy, and this has definitely put the BJP also on the back foot now, because there is absolutely no difference between either of the parties, where both these party leaders are making personal statements against the Prime Minister and now Basangauda Patil Yatnal against Sonia Gandhi. And all said and done now, the real issues are definitely taking a back seat here, Samiksha, because now it was mainly being fought on agendas such as corruption, development, lack of infrastructure, lack of civic amenities, but now it seems like it is poison politics which is taking center stage, and both the parties are now going ahead making allegations and counter allegations against each other, and nobody is even worried about the real issues as well, and this is taking a prominent chunk of the time of the public too. And this is absolutely sad, because we are seeing in less than 2 weeks Karnataka will be going for elections, and all the people are watching this. Even when the BJP needs to go ahead and make a statement saying that the Congress will have to be very careful, the BJP at the same point of time also have to be very careful when they're going ahead and making statements. And Basangauda Patil Yatnal has been such a controversial leader in the state of Karnataka, and he's always been going ahead making controversies. He's also the one who's also abused the sitting Chief Minister of Karnataka, Basavaraj Bommai. He's also abused the sitting Minister for Industries and Commerce, Murugesh Nirani. He's hit out at CC Patil. He's made controversial statements against his own party leaders, and now he's making a controversial statement against Sonia Gandhi as well, and now the BJP is remaining tight-lipped, and therefore the Congress are questioning the BJP's double standards. But the Congress also should not forget the fact that their AICC president, the president of the Congress party, is making statements about Prime Minister Modi, and after pressure, after the media highlighted hit out stating that this was totally uncalled for, only then did he go ahead and issue a public apology. Now the Congress is also demanding the same, stating that the entire UPA party proposed her name to be the Prime Minister of this country. Abdul Kalam invited her to become the Prime Minister of this country. She sacrificed her Prime Ministership for the sake of this country's progress. She appointed Shri Manmohan Singh as the Prime Minister. That is a big, large-hearted woman. No woman in this world would have shown as such large-heartedness for such type of great mother who is sacrificing her prime ministership, who is building the Congress party, who has stood in the crisis when Congress ship was sinking. She took up the responsibility and she led for almost 22 decades. Now she has been called as Vishakanya. I demand the apology not from the rogue Yatnal. I demand from the Honorable Prime Minister of this country and the Chief Minister of this country. And I request, demand Nadaji
to expel him if you have respect for the woman, for the motherhood, for the great leaders who have sacrificed their positions for this country. You have to take, you should be accountable, you should answer for this great mischief. But What, BJP Mr. leadership, but BJP leadership says, sir, it's a reaction to the action which mistake made by Mr. Mallikarjun. See, Mr. Mallikarjun Kharge is here, front of you. He is in Karnataka. He is available for you. He will comment. He is wise enough, capable enough. But Srimati Sonia Gandhi is not here. I am the president, representing a political party. It is my bound duty. The nation stand by her. The woman would stand by her. Our culture and tradition stand by her. Sir, what do you want to say about the Geeta Shivraj Kumar's entry to the party? How much of a boost is it for the Geeta Shivraj Kumar is a daughter-in-law of Rajkumar. She is a daughter of Bangarappa. She has her own strength in the film industry. She is not only an housewife, she is a producer. She is a producer with a big political and film legacy. So she is not only a political Bangarappa's daughter. So, irony there of the Congress which stands exposed, DK Shivakumar demanding the expulsion of the BJP leader who made these distasteful remarks against Sonia Gandhi but did not condemn the remarks that were earlier made by Mallikarjun Kharge, where he called the Prime Minister a poisonous snake. Later, of course, retracted that statement. But DK Shivakumar there demanding the expulsion of the BJP leader who called Sonia Gandhi a wish kanya. We slip into a very short break. Coming up on the other side, ex-JDU leader and Nitish aide Ajay Alok joins the BJP in presence of Union Minister Ashwini Vaishnaw. जी का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला, हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया। ये भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों ना बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूँ। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। लोगों को मोदी से इतनी परेशानी क्यों है, और आज इसकी वजह मैं भी रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये जो नाराजगी दिख रही है ना, ये जो बवाल हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की काली कमाई के रास्ते मोदी ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। 2016 में जब मैं देशवासियों कहता था आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं?
अभी कुछ समय पहले IMF का एक रिपोर्ट आया जो है, एक वर्किंग पेपर, शायद आपने जरूर देखा। ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसी योजनाओं के कारण महामारी के बावजूद भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म होने की कगार पर है, और यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, तो विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं, भारत की आवाज को एक नई All right, we continue to track the latest on the probe into the Poonch terror attack. Let's go across to Gursimran also joining us. Gursimran, we understand that the DG J&K police also visited the terror spot. If you can tell us how many suspects have been arrested so far or taken into custody, and we also understand some of the terrorists are still said to be active in the adjoining locations. See, so make sure right now we are in the Poonch where the massive anti-terror ops is on, and now you will find that the drones are being used for the surveillance of the area. Heavy rains have started here. The terrorists are possibly hiding in the hideouts that are in the upper reaches, where you see the natural cavities are being used as the hideout by the terrorists, and now the drones are being pressed into the action. I'll request Sarjivan to keep showing you the visuals of the drones, the sophisticated drones that are now being used by the Jammu and Kashmir police for the counter-terror operations that are underway. And this is very important, keeping in view the tough terrain of the area, that how the terrorists are still hiding in the area. And these are the sophisticated drones that can see even deep inside 500 meters to 1 kilometer territory, and that's why these massive anti-terror operations are on in the area. I'll request Sarjivan to come this way to show you the anti-terror operations that are on in the area, and they are using the sophisticated machinery, man-made machinery have been pressed into the action. Important to mention that the terrorists are still hiding in the area. The total number of terrorists that are active in the Poonch and Rajouri stands at 10 to 12 terrorists are active, and the number of vehicles, the number of terrorists that have carried out the attack on the vehicle of the Indian Army, that were 3 terrorists they have carried out this attack. And now the inclement weather conditions that are prevailing in the area are making it tough for the counter-terror operations to take place, because the drone surveillance comes to a halt with this weather changing its mood with every passing minute, and that's why the terrorists are getting an edge when it comes to the Poonch terror operation that has been launched. And DGP Dilbagh Singh too was here monitoring the operation. We'll be continuing with this rolling coverage right after this short break. अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब ये आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर, उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी। जो पुरानी सोच और अप्रोच वाले लोग थे वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की जरूरत क्या है, दूसरे देश बना ही रहे हैं, वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सीन दे ही देंगे। लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना
और परिणाम हमारे सामने है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए। देश की कई प्रतिभाओं ने तब काम का माहौल ना देखकर देश छोड़ने तक का फैसला कर लिया। ये सब उन्हीं सरकारी नीतियों का थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट था। उन नीतियों के इम्पैक्ट ने देश के इनोवेशन, हार्डवर्क और एंटरप्राइज की क्षमता को कुचल दिया। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्ग तक पहुंच पाए, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। फाइव जी का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया। आज जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो डबल इंजन का मतलब क्या है? डबल इंजन का मतलब है कि जो नीति प्रणीति मोदी जी भेजते हैं उसको जमीन पर इंप्लीमेंट करते हैं येडियुरप्पा जी और बोम्मई साहब उसको जमीन पर इंप्लीमेंट करते हैं, तो वह डबल इंजन की सरकार कहलाती है, वह डबल इंजन की सरकार बनती है। अब डबल इंजन का फायदा क्या है? डबल इंजन का फायदा है कि 1 लाख करोड़ रुपए आज आपको दिल्ली से सड़क बनाने के लिए मिला है। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए। 19,000 किलोमीटर आपकी सड़क बनी थी।